Stars spinner, and Dangarpura Stars, they have won the toss and have opted to bat first. The first ball of the game, and this has been lofted away on the onside and one bounce into the mid-wicket boundary for 4. A good start, a quality start first up for the batter as he finds the ball right in his hitting zone and beautifully lofts it away. Wonderful shot to get off the mark. It's 4 without loss. Tawheed Butt and Muzaffar, the two batters out there at the centre, walk down the centre to start the proceedings for Dangarpura Stars, while as Kaisar Mir is having that white shade in hand to start the proceedings for Rising Stars Binner. 4 without loss after winning the toss in a grand final in a title clash. They will look to put runs on board. First up as Kaisar Mir gets ready once again. Bowling from the com box and over the stumps he goes. Short down the leg side. And umpire signals as wide. That additional run takes the score to 5 without loss. Starts off with the boundary, Tawheed Butt his innings, and Muzaffar is at the non-strikers end, and he is yet to receive the strike. And Kaisar Mir starting the proceedings from the com box, and on the offside he has got 5 fielders inside the ring. Third man is out short again, down the leg side as the batter pulls him away. It doesn't find the middle of the bat, but still the ball trickles away down to the deep mid-wicket region, and umpire signals the 4. It was a short delivery on the body. There wasn't any bounce as the bowler had expected. As easy pickings for the battery, beautifully picks that one up, even though it wasn't a convincing one. It got it high on the bat, but you know the field restrictions are on, and just 2 fielders outside the 30-yard circle. That was a safe shot, and it goes down to the boundary for 4. Kaisar goes again, and this time he has been consistently back off a length in his first over. You know, you got a new ball, brand new ball, and you just need to push it further up, just pitch it further up, see if there is some help for you, see if there the ball moves, see if there is any kind of swing on offer. But until now, Kaisar, he is more focusing on back off length, he is more of a short of length balls until now in his over. As he goes again, just outside off stump, not enough room for the batter as he was trying to guide it, he was trying to steer it on the offside. This time there is no connection with the bat at all, and it goes into the gloves of wicket-keeper. Over number 1 in progress, and the score on board is 9 without loss. Tawheed, a couple of boundaries for him as Kaisar goes once again, shot on the onside, pulls him away as he found the gap. The mid-wicket fielder goes quickly, and in the meantime the batters cross for a single as the score is into the double digits now. It's 10 without loss after the completion of over number 1. As I told you that Kaisar Mir bowled the first over, and he was more focusing on bowling back off length. He was more focusing on bowling at the shorter side of the wicket. And even though, as I said, he got a new ball, this white cherry, and it can swing a bit. And if you pitch it further up, and you'll try to search for the swing. But Kaisar just focusing on the short stuff as he has conceded 2 boundaries. 10 without loss, and Tawheed is going to retain the strike as well as he got a single off the final ball. And Kaisar conceding 10 in the first. As we request the viewers who are watching and enjoying this game, do share the live broadcast so that other cricket lovers can enjoy, they can engage themselves to this game. Suhail Dar is watching from Zetlora, and Haider sending in best wishes for Rising Stars spinner. Yes, he's not the part of playing 11 as the first ball of the fresh over, the batter was just trying to tap it on the onside. Offside, gets an inside edge, it rolls past the wicket-keeper who goes quickly to stop the ball, and there is no chance of a run. Next ball, a spinner being introduced, and he has been taken on beautifully, over long on for a 6. And pushing it further up, the spinner right into the hitting zone, and this has been smoked away over long on boundary, and it is the first maximum, it's the first 6 of the day. A fantastic strike down the ground as Muzaffar gets, it is off the bat of Tawheed. He's got 2 fours as well, and he starts in a positive note. 2 fours and a 6 off his bat, as score moves to 16 without loss. In the meantime,
Shot onto the body, pulls him away. Couple of bounces and into the square leg boundary for 4. This is fantastic hitting at the start of the innings. But this one was a bad delivery, a drag down, real drag down that was. And all batter needed, he was just going off the back foot and smokes the pull shot away. Beautiful shot, glorious shot, and it rockets away into the fence for 4. It's 20 without loss. In the meantime, Tawheed is looking in ominous touch. He's looking in a good nick. And he's middling the ball well from the very word go. He started with couple of fours. And now in this over, is it a 6 and a 4 already? His next ball onto the pad works him away as the bowler goes quickly. There is no addition to the total. Irfan Lun has got the ball in hand as the captain Tahir starts with a spinner here at the other end. And the first over was bowled by Kaisar Mir, where he conceded 10 as he goes for the final time. Shot in wide, tries to cut, doesn't get anything behind the ball. There was a chance to flash hard onto this ball as there was a bounce as the batter fails to lay bat onto the ball, goes into the gloves of wicketkeeper. 12 is done and dusted. It's 20 without loss. A good positive start for Dangarpura Stars, winning the toss, deciding to bat first. As Tawheed Butt has faced all those 12 deliveries, as Muzaffar is yet to face a delivery. 2 overs have gone. Now he is on strike as he is getting ready to face Kaisar. For the first time, Kaisar goes down the leg side and he was trying to drive, and he offers a simple catch. The ball was onto the pads, it was onto the leg stump. He could have easily flicked that one away, but rather he plays with a straight bat and gone on a first ball. A first ball duck for Muzaffar here. And he isn't, look at that, look at the reaction of the batter. He isn't happy at all and even cannot believe it. And it was a harmless delivery down the leg side onto the pads. He just backed away, tries to drive the ball. And a good reaction catch on his follow through by Kaisar. Good catch as it sends us back Muzaffar on the first ball as he walks back to the pavilion. And an early breakthrough for Rising Stars spinner as Kaisar Mir strikes 20 for the loss of 1. And still Muzaffar cannot believe it. And he tries to drive the ball on the up, and that was an excellent catch by the bowler. As Haider and Ejaz Ahmed is also watching and enjoying the game. So you could say that Kaisar just carries a bit of shape away from the batter. As I told you in the first over, he was more often on the back of length side. But this time the first ball of the fresh over, he just slips in its full delivery, which just shapes away from the batter. And that is why Muzaffar wasn't able to time the ball well, and he offers a catch. But not always easy for a fast bowler in his follow through to take those catches. But sometimes we've seen those catches get stuck, and that is where Kaisar Mir has done a good job, and he plucks the catch and Muzaffar departs. The new man is in at number 3. It is Shabir Pandit, and he scored a good experience of the game as he faces Kaisar for the first time. Wide outside off stump will be a wide, and surely it is, as umpire is just exercising his arms, signalling wide to the scorer and to the commentary box as well. A single added to the score, an additional run added to the tally takes the score to 21 for the loss of 1. So an early wicket for Rising Star spinner. They will try to restrict the scoring opportunity. Short ball, and that is a beautiful pull shot. Wonderful shot off the bat of Shabir Pandit as he demolishes the ball away over mid-wicket boundary for half a dozen. And that was audacious shot. That was a rollicking shot. Off the back foot he goes and beautifully hooks that one away. Spectacular effort by the batter there as the shot was laced with timing, and a picturesque shot as the ball travels. A distance has gone all the way for a 6. 27 for 1 as Kaisar goes again. Shabir nicely steers it down to third man, and it runs away down to the boundary for 4. That is clever shot. That is a beautiful shot as he executes it very well.
and it goes down to the boundary for 4. Nicely played, riding the bounce beautifully, Shabir Pandit there, as he starts in a positive way. He starts in a positive note. A 6 and a 4 to start the innings, Shabir Pandit, and it always boosts the confidence, it always boosts you. And in the meantime, Kaisar gets ready once again. He's got some problems in the follow through as he goes back to the top up now. It is 31 for the loss of 1 header. He is admiring that take of the bowler. He's sending in best wishes as well. In the meantime, Mir Fayaz, walaikum salam, and he's watching from Swain as well. Kaisar goes again, bounce on to that delivery. You can see that was a vicious delivery, venomous ball, as Shabir was lining up to dry the ball. There is no connection at all, and it beats the wicket keeper and third man as well. Runs away down to the boundary for 4. It's 5 wide still, and Kaisar Mir got some problems in this over. Nothing the bowler could have done about this delivery, as it was a good length ball, as it just rears off the surface. A venomous delivery that was, as Shabir was trying to drive, but doesn't get any bat behind the ball, and it goes over the wicket keeper's head down to the third man boundary for 4. And 11 runs coming off this over. Next ball as Pandit punches it off the toes. Fine is the fielder at cover. There is no run at all. And Nadeem Nabi, it is the Green Park sports field of Paripur, and it's a no ball signal there, as the umpire is just giving us the confirmation. A free hit coming up. Nadeem, hope you got the information. And Abdulaziz Rathar is watching the game. Walaikum salam. He is watching from Wizard. And next ball, Shabir goes onside, and he goes big. That is a monstrous hit over mid-wicket boundary for a 6. Just picks the length quickly, judges the length very quickly, and he has caught that ample time. He swings hard and swings handsomely over mid-wicket. Second 6 of the over, and Kaisar Mir has got problems now. He has conceded 18 runs. 1 for 28 in his 1.5 over spell. Nonetheless, he's got a wicket as well, but he has been way too expensive, conceding way too many runs. That was a sumptuous hit. That was a beautiful hit, as Shabir Pandit, he is infusing all his experience of the game he has got, and he is 16 of just 5, 2 sixes and a boundary as well. It's 42 for 1. It's a fine start for Zenigir Stars, as Kaisar goes for the final time over the stumps. Outside off again. Fantastic strike. Good hand-eye coordination there, as Shabir beats the backward point fielder as it races away down to the boundary for 4. That is a fantastic hitting. Shabir Pandit moves to 20 with that boundary of just 6 bowlers. As 3 overs gone, it's 15.33 the starting run rate, as currently they're going 46 for 1. As we welcome Abdulaziz Rathar with open heart, and Sheikh Haroon as well. Walaikum salam, brother, and I have with me Sophie Parvez as well, welcoming to the commentary box. शुक्रिया फिरदौस आपका. अब्दुल अजीज राथर जो है विजर वागोरा से हमारे साथ जुड़े हैं. शेख हारून भी हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. चौथे ओवर की पहली गेंद बैक फुट पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा. महफूज क्रीज में बल्लेबाज तौहीद बट जो है इरफान लोन की गेंद का सामना कर रहे थे. और आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूंगा कि ये डंडूसा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला ज़ेनेगिर स्टार्स और राइजिंग स्टार बिनर के माबैन इस वक्त जारी है. याकूब मीर BMZ ग्रुप सरकपुरा रफियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. इरफान लोन चौथे ओवर की दूसरी गेंद के साथ 46 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर. गेंद की बैकफुट पर गेंद को कट किया, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया. 30 गज दायरे के अंदर रन बनाने का कोई मौका नहीं. तौहीद बट ने 19 रन बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए, और शब्बीर पंडित ने कुल मिलाकर जो है 6 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाए. इरफान अगली गेंद के साथ इस मरतबा गेंद को खेल दिया है कवर के ऊपर से. गेंद बाउंड्री लाइन को छूते हुए 4 रन के लिए. तौहीद बट के बल्ले से आने वाला ये चौका, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल होते हुए 3.3 ओवर्स में. सिराजुद्दीन हमारे साथ पांजला रफियाबाद से जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा. आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, JK स्पोर्ट्स डिस्कवरी पर.
इरफान लोन अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर फेंक रहे हैं। सामना करेंगे उनकी गेंद का तौहीद बट, जिन्होंने 23 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए जयनगीर स्टार्स की जानिब से। अगली गेंद ओवर द विकेट गेंद की और इस मरतबा गेंद को हवा में खेला, लेकिन फील्डर काफी पीछे खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और काफी आगे आना पड़ा फील्डर को जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा स्कोर में। 10 गेंदों पर 30 रन की शराकतदारी हुई है तौहीद और शब्बीर पंडित के दरमियान। अगली गेंद इरफान लोन की बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया ऑन साइड की जानिब जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 और रन का इजाफा स्कोर में। दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52। 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद अब फेंकेंगे इरफान लोन और सामना करेंगे तौहीद बट। तौहीद बट के लिए ओवर द विकेट छोटे से रनअप के साथ और इस मरतबा बल्ले और गेंद के दरमियान सही कनेक्शन और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। एक और छक्का आता हुआ शब्बीर पंडित के बल्ले से और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ वो 58 हो चुका है। सिर्फ 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 4 ओवर्स में 58 रन बोर्ड पर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम जो है किस टारगेट की तरफ जा रही है। गनाई जुबैर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आउट होने वाले बल्लेबाज थे मुजफ्फर जो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। आसिफ हरी हमारे साथ गुरेज से जुड़े हैं। उबैद उम्मीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराजुद्दीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 58 स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर जयनगीर स्टार्स का इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन पर तौहीद बट खेल रहे हैं, जिन्होंने 17 गेंदों का सामना किया, जबकि शब्बीर पंडित ने 21 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। 300 का स्ट्राइक रेट शब्बीर पंडित के पास और अब परे अयूब को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। परे अयूब बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया ऑन साइड की जानिब। ऑप्शन से बाहर गेंद थी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 हो चुका है। नो बॉल का इशारा आता हुआ इस दौरान और तौहीद बट एक मरतबा फिर परे अयूब की गेंद का सामना करेंगे। परे अयूब और इस मरतबा विकेट छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश, स्टंप्स बिखेरी वहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन कोई नुकसान नहीं जयनगीर स्टार्स के लिए। जयनगीर स्टार्स का स्कोर 60। 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी। परे अयूब जो है बॉलिंग मार्क पर है। रईस अहमद भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गर्मी के हवाले से कुछ लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा काम ही यही है और हमें जो है करना पड़ता है। इस दौरान गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब, रन बनाने का कोई ऑफ साइड की जानिब रन बनाने का कोई मौका नहीं। गनाई जुबैर जुड़े हैं, आसिफ फरी जुड़े हैं और मुदस्सिर कश्मीरी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 5वें ओवर का खेल जारी है। बॉलिंग मार्क पर है परे अयूब की अगली गेंद बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया स्लिप की जानिब। थर्ड मैन मौजूद नहीं वहां पर, गेंद है गोल पोस्ट से टकराने के बाद गेंद की रफ्तार कम हुई। इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 61 हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान, बल्कि डेड बॉल का इशारा गालिबन आता हुआ। तो 1 रन का इजाफा स्कोर में परे अयूब। अब एक मतबा फिर शब्बीर पंडित सामना करेंगे उनकी गेंद का। शब्बीर पंडित के लिए गेंद की बैक फुट पर गेंद को एक मतबा फिर पुल किया और गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर। बेहतरीन टाइमिंग के साथ और गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर जाते हुए आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इस गेंद को खेला बैक फुट पर परे शब्बीर पंडित। शब्बीर पंडित लगातार जो है उनके बल्ले से ऐसे स्ट्रोक्स देखने को मिले और उनका स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं 28 रन पर पहुंच चुके हैं 9 गेंदों का सामना करते हुए शब्बीर पंडित। एक मतबा फिर सामना करेंगे, इस मतबा बैक फुट पर ऑफ साइड की तरफ गेंद को खेला। पॉइंट पर फील्डर मौजूद। ऑफ साइड पर कुल मिलाकर जो है 7 खिलाड़ी तैनात, जबकि ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात और ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी तैनात। अगली गेंद ओवर द विकेट और इस मतबा एक मतबा फिर पॉइंट की जानिब गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। रफियाबाद पेंटर्स ग्रुप से हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं, फिरदौस अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं।
जान बट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो है ये 6 ओवर्स का बल्कि 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 67 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। जैनगीर स्टार्स को बेहतरीन आगाज फराम होता हुआ शब्बीर पंडित तौहीद भट्ट के जरिए। शब्बीर पंडित ने 11 गेंदों का सामना किया, 28 रन बनाए। तौहीद भट्ट ने 20 गेंदों का सामना किया और 31 रन बनाए। जिया मनहाज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल डन जैनगीर स्टार्स, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय जो है जाहिर करने के लिए जैनगीर स्टार्स के लिए। अब देखना होगा बॉलिंग मार्क पर परे अयूब के बाद, परे अयूब का जो पहला ओवर उसमें 9 रन आए और अब पारी का छठा ओवर फेंकने के लिए बॉलिंग मार्क पर तैयार है इरफान लोन और सामना करेंगे उनकी गेंद का शब्बीर पंडित। गेंद के ऑप्शन से बाहर और अंपायर वो यहाँ विकेट कीपर जो है स्टंप्स के साथ बिल्कुल चिपके हुए उनके हाथ में जाती हुई गेंद। इरफान बॉलिंग मार्क पर। उमर फारूक हमारे साथ अच्छे बल से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिया मनहाज भी जुड़े हैं, तारिक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान लोन आबिद है बॉलिंग मार्क पर। मैं माजरत चाहूंगा, लोन आबिद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर जो कि पहला ओवर फेंक रहे हैं पारी अपना जो और पारी का छठा ओवर। बैक फुट पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को खेल दिया, हालांकि जंप लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन गेंद जो है उनकी पहुंच से दूर और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। यह तौहीद भट्ट के बल्ले से आने वाला चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 71 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर जैनगीर स्टार्स का। तारिक अहमद और खालिद गन्नाई बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आबिद एक मरतबा फिर गेंद की बैक फुट पर एक और बड़ा स्ट्रोक और देखना होगा एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। एक और चौका आता हुआ तौहीद भट्ट के बल्ले से। लगातार चौके और छक्के बरस रहे हैं तौहीद भट्ट और शब्बीर पंडित के बल्ले से। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 75 हो चुका है। छठे ओवर का खेल जारी। बॉलिंग मार्क पर आबिद ओवर में चौथी गेंद के साथ इस मरतबा थर्ड मैन के ऊपर से देखना होगा फील्डर मौजूद और 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 76, 23 गेंदों पर 56 रन की शराकतदारी हुई है शब्बीर पंडित और तौहीद भट्ट के दरमियान। अब शब्बीर पंडित जो है वो सामना करेंगे लोन आबिद की गेंद का। बैक फुट पर इस मरतबा टाइमिंग सही नहीं, देखना होगा क्या फील्डर कैच लेने में कामयाब होंगे और कैच लेने में कामयाब तो इस तरह से शब्बीर बल्कि तौहीद भट्ट की इनिंग का खात्मा होता हुआ शब्बीर पंडित की इनिंग का खात्मा होता हुआ 12 गेंदों का सामना किया, 28 रन बनाए और 76 के स्कोर पर यह दूसरी विकेट गिरी। लॉन्ग ऑन पर असदुल्ला ने उनका कैच हासिल किया और शब्बीर पंडित 28 रन की पारी खेलने के बाद अब पवेलियन वापस जाते हुए। आदिल रियाज जाना चाहते हैं कहां पर है ये मैच। इस वक्त परेपोरा स्पोर्ट्स फील्ड पर जारी है डंडूसा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। आदिल रियाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शौकत परा भी हमारे साथ जुड़े हैं। गालिबन आप हदीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आपके बगल में जो है हम इस वक्त लाइव नशरियात कर रहे हैं। तो खालिद गन्नाई, शौकत परा, आदिल रियाज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फाइनल मुकाबला डंडूसा प्रीमियर लीग का, लेकिन फाइनल मुकाबला परेपोरा स्पोर्ट्स फील्ड पर खेला जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह है कि डंडूसा प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट है वो डंडूसा में ऑर्गेनाइज किया गया और मैदान जो है वो मेवा बागात के बिल्कुल बीच में वाक़ा है और एक एग्रीमेंट के तहत अप्रैल महीने तक उस मैदान में जो है खेल सरगर्मियां रहती है, लेकिन उसके बाद मैदान को खेल सरगर्मियों के लिए बंद किया जाता है और उसकी बुनियादी वजह जो फाइनल परेपोरा में खेला जा रहा है इस वक्त, इसकी बुनियादी वजह यही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का जुड़ने के लिए। माजिद खान ब्रंदोब रफियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अब 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, बल्कि छठे ओवर का खेल जारी है और 5वीं गेंद छठे ओवर की फेंकेंगे लोन आबिद, सामना करेंगे उनकी गेंद का जैनगीर स्टार्स के लिए नए बल्लेबाज जो आए हैं वो सामना करेंगे। जैनगीर स्टार्स का स्कोर है
76, 2 विकेटों के नुकसान पर लोन आबिद का ओवर जो है मुकम्मल होता हुआ। कुल मिलाकर 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 76 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। So the fielder restrictions are done, and Zanigir Stars have really punished the bowlers, although they have lost 2 wickets, and in the previous over of Lonabid, Shabir Pandit also departed back to the pavilion, was caught at long on, was a good catch there by Asadullah. Now 6 overs and 76 on board, that's more than 12 per over as Ayub starts the fresh over. As the batter Tawheed has been more often aggressive and attacking batter, batting with positive intent on 40 of just 25 bowlers, just presses forward and pushes it back to the bowler, and there is no addition to the total. As in the meantime Ayub, who conceded 9 in the first over, and he's pulling a bit quicker through the air, he's not letting the batter to get under the ball quicker through the air, a flatter trajectory delivery. And Tawheed was lining up to go onside, doesn't get any bat behind the ball, and it goes into the gloves of wicketkeeper. We know number 7 of the first innings. As Zanigir starts here, really started well. This is a brilliant start for them, 76 on board and 12 runs per over. And the bowlers not learning the lessons we've seen. They've been on to the shorter side, and Shabir Pandit, when he was batting with Tawheed, they both were going really strong. And the runs were flowing all across the ground. Again a quicker delivery, and that is where Ayub has been good at. He's not bowling it slow, he's not giving right into the hitting zone of the batter. Mostly we've seen when you bowl it fuller and nicely toss it up, and the batters try to go for the big shots, and that is what Ayub is thinking at this stage. He knows the batters are lining up for the big shots. So he's keeping it tight, he's keeping it quick. Again, 4 dots in a row. That is a great stuff. Tanveer Baba. And he's watching from Qatar as well with Akhtar Hayat, Ishfaq Mir and Adil Riaz. 7th over in progress, and until now Ayub has completely deceived the batter with his pace, with his variations. As he goes for the final time, cuts it away in style, and it will beat the wideish third man fielder and run away down to the boundary for 4. As Ayub needed to finish that over well, but the final ball shot and wide outside off stump as Tawheed but beautifully places the shot and nicely cuts it off the back foot, crouches low, and the ball runs away past that deep third man fielder and into the boundary for 4. 7 overs and it's 80 for the loss of 2, going at 11.3 runs per over. After winning the toss, was a good toss to win on a bright sunshiny day and on a good batting track. Zanigir Stars, as I said, they have been on a move today from the very word go, and the bowlers received severe punishment in those 6 overs, conceding 74 runs, but they have got 2 wickets as well, as Abid was the man who got rid of Shabir Pandit. That is an exquisite shot, a misfield there, and it will go down to the boundary for 4. Driven on the up and wideish cover fielder makes an absolute mess of this. Hey, it could have been just a single there, and he lets the ball to burst through his hands and into the boundary for 4. That was a beautiful shot as well. And that boundary takes the score to 84 for the loss of 2, as Abid goes on to the pads of the batter, tries to flick it away, gets it off the inside half of the bat, as the wicketkeeper runs quickly, keeps the batters down to 1, and a single takes the score to 85 for the loss of 2. We're in over number 8. Remember, it's just a 17-over game per side, as Sophie Parvez already informed the public that this Dandoosa Premier League, it was scheduled to be played at Chaklu Sports Field, but due to some unknown circumstances, the match has been shifted to Paripura Sports Field. And you know, they have their own tournaments running in, and they have that game at 2 p.m. and then after that there are the activities of football matches as well. So the organizers have decided it will be a 17-over game per side, and in the meantime Zanigir starts at a respective position, at a good and a strong position they got after Flyer. It's a ferocious start with 85 on board, as
Abid goes again further up to the batter. He drives, screams the ball away to the extra cover, and it runs away down to the boundary for 4. A delicious drive coming off the bat of Tawheed Butt, and he is on song today. He's looking so dangerous with the bat at the top of the order. That was driven handsomely wide of the cover, as Ayub had no chance at all, and it runs away down to the extra cover boundary for 4. Even though Dangarpura Stars have lost 2 wickets, but their positive intent continues, their aggressive approach continues, as the batters are flowing there, as the batters are scoring runs freely, and there is an absolute pressure on the bowlers, leaking runs as at will in just over number 8 in progress, and they already have 90 runs on board. And at this stage, Zanagir Stars feeling themselves at a good position, as the bowlers leaking runs at will. Abid, 1 for 19 as he goes for the final time. Fly to delivery, down the ground he goes, it's up in the air. Tahir settles under the ball and takes an absolute dolly of a catch at long off, as another wicket falls. A good execution, clever bowling there by Lone Abid, as he bowls a slower delivery, loopy, inviting the batter to go down the ground to clear the bigger boundary. But he had good fielder there. Tahir is a terrific fielder as well, as he completes a fairly simple catch, as Pilal departs on 5. Zanagir Stars lose their third. 8 overs gone, as Lone Abid has his second of the day, 90 for 3. शुक्रिया फिरदौस। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 90 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर ज़ैनगीर स्टार्स का। और जैसा मेरे साथी आपको जानकारी दे रहे थे कि ये मुकाबला जो है 17 ओवर्स पर मुश्तमिल है, तो देखना होगा क्या टारगेट यहाँ पे सेट होता है ज़ैनगीर स्टार्स की जानिब से। मुकर्ररा 17 ओवर्स में राइजिंग स्टार विनर के लिए, और एक बड़े टारगेट की जानिब जा रही है ज़ैनगीर स्टार्स की टीम। सिर्फ 6 ओवर्स बल्कि 7 और 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 90 है मजमूई स्कोर। खान मोहसिन हमारे साथ जुड़े हैं अख्तर हयात के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ तनवीर बाबा भी हमारे साथ कतर से जुड़े हैं, जिया मनहाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़ैनगीर स्टार्स के लिए जुबैर को भेजो, ये जानकारी दे रहे हैं कि जुबैर को गालिबन देखना चाहते हैं बल्लेबाजी में, तो जुबैर भी जो है उनका नंबर भी जब आ जाएगा तो वो ज़रूर जो है खेलने के लिए आ जाएंगे ज़ैनगीर स्टार्स की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर 90 के मजमूई स्कोर पर 3 विकेटें गिर चुकी है ज़ैनगीर स्टार्स की। अब जुबैर जो है तनवीर भट्ट और जुबैर अहमद को बुलाया गया है बल्लेबाजी के लिए। अब अगली गेंद, इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका और 50 रन यहाँ पे मुकम्मल होते हुए तनवीर भट्ट के सिर्फ 33 गेंदों का सामना किया और 50 रन मुकम्मल किए तनवीर भट्ट ने, बल्कि तवहीद भट्ट ने 33 गेंदों का सामना किया। 2 छक्के और 8 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। मीर असदुल्ला जो है बॉलिंग मार्क पर है, पारी का 9वां ओवर फेंक रहे हैं और इनफरादी तौर उनका पहला ओवर सामना करेंगे एक मरतबा फिर जुबैर अहमद जो अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। असदुल्ला की गेंद का सामना करेंगे। असदुल्ला बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, सामने है जुबैर अहमद। 50 रन की लाजवाब पारी खेली तौहीद भट्ट ने 33 गेंदों का सामना करते हुए। इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद उसके अलग बाउंड्री पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 92। 3 विकेटों के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल जारी। 92 मजमूई स्कोर हो चुका है। इस दौरान हमारे साथ खान मोहसिन और जिया मनहाज जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तवहीद भट्ट 50 और जुबैर अहमद 1 रन पर खेल रहे हैं। जिया मनहास ने जो है यहाँ पे राय दी थी कि जुबैर को भेजा जाए, तो जुबैर जो है इस वक्त बॉलिंग मार्क पर है। मीर असदुल्ला जो है वो बॉलिंग मार्क पर है। असदुल्ला ओवर द विकेट, गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है पॉइंट की जानिब। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे, बल्कि यहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। 92 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। और ये
एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम, लेकिन नाम ले नहीं पाएंगे। जान बट भी हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड बैट्समैन, बहुत बहुत शुक्रिया। जिया मन्हास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़ेनेगिर विन द फाइनल मैच। ये जिया मन्हास जो है वो ज़ेनेगिर स्टार्स के हक में अपनी राय दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात में आप लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए शुक्रिया। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 92 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। मीर असदुल्ला के इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और अच्छा किफायती ओवर साबित होता हुआ असदुल्ला का। अब 10वें ओवर में कौन से गेंदबाज आएंगे देखना होगा। गालिबन आबिद को जो है कंटिन्यू की रखा गया है, तो आबिद अपना तीसरा और पारी का 10वां ओवर फेंकेंगे। 50 रन की पारी खेली तवीद बट ने, लाजवाब पारी, 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से यह 50 रन बनाए तवीद बट ने। सोहान बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सोहान हमारे साथ जुड़े हैं, कहां से जुड़े हैं जरूर जो है जानकारी दीजिएगा। आबिद बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे उनकी गेंद का जुबैर अहमद। जुबैर सामना करेंगे आबिद की गेंद का। इस मतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है, देखना होगा विकेट कीपर गए, क्या गेंद पैड को छूने के बाद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है, देखना होगा। और इस दौरान गालिबन बाउंड्री, जी हां, पैड को छूने के बाद गेंद फाइन लेग बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 96, 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर लोन आबिद, जुबैर सामना करेंगे एक मतबा फिर उनकी गेंद का। लोन आबिद अपना तीसरा और पारी का 10वां ओवर फेंक रहे हैं। 2.1 ओवर में लोन आबिद ने कुल मिलाकर 19 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। सोइन रफियाबाद से सोहान हमारे साथ जुड़े हैं और शाहजेब डार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की जानिब और गेंद को फील्ड किया, बिल्कुल बल्कि कैच वहां पे लिया फील्डर ने और यहां तीसरी विकेट गिरी है, बल्कि चौथी विकेट गिरी है। जुबैर अहमद 6 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर आउट हुए। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उनका कैच हासिल किया गया। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी अब तैनात किए गए हैं और उसका फायदा मिलता हुआ 96 के स्कोर पर 4 विकेट गिरी है। 10वें ओवर का खेल जारी और लोन आबिद के खाते में जाने वाली यह तीसरी विकेट। 2.2 ओवर में 19 रन दिए लोन आबिद ने और 3 विकेट हासिल की राइजिंग स्टार बिनर के लिए। शाहजेब डार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस लाइव नशरियात का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी और फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। लोन आबिद बॉलिंग मार्क पर और अभी तक के कामयाब गेंदबाज राइजिंग स्टार बिनर के, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके। 96 के मजमूई स्कोर पर राइजिंग स्टार ज़ेनेगिर स्टार्स के। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। 96, 4 विकेटों के नुकसान पर लोन आबिद बॉलिंग मार्क पर और सामने है अब नए बल्लेबाज आए हैं डार आरिफ आए हैं नए बल्लेबाज ज़ेनेगिर स्टार्स की जानिब से। साथ निभाएंगे तवीद बट का और सामना करेंगे लोन आबिद की गेंद का। लोन आबिद 10वें ओवर की तीसरी गेंद के साथ छोटा सा रन अप ओवर द विकेट। गेंद की बैकफुट पर गेंद को कट करने की कोशिश, गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तवीद बट ने 36 गेंदों पर 50 रन अपने मुकम्मल किए। अगली गेंद और इस मरतबा गेंद को खेला हवा में, शॉट देखना होगा। फील्डर गेंद के नीचे ताहिर और उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो आरिफ जो है डार आरिफ बिना खाता खोले पवेलियन वापस जाते हुए। आरिफ एक ऊंचा शॉट खेले ऑन साइड की जानिब, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ताहिर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच हासिल करके विकेट हासिल की। तो यहां 5वीं विकेट गिरती हुई ज़ेनेगिर स्टार्स की 96 के स्कोर पर और आबिद के खाते में जाने वाली ये 4थी विकेट।
आबिद अभी तक के कामयाब गेंदबाज जिन्होंने 4 विकेटें हासिल किए हैं 2.3 ओवर्स में 19 रन देकर। अब देखना होगा जैनगिर स्टार्स की जानिब से कौन से नए बल्लेबाज आएंगे जो साथ निभाएंगे तौहीद बट का और सामना करेंगे लोन आबिद की गेंद का। शाहजेब डार बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त जुड़े हैं इस लाइव नशरियात में, लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। डंडूसा प्रीमियर लीग का यह फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी परेपुरा स्पोर्ट्स फील्ड पर, और परेपुरा स्पोर्ट्स फील्ड पर आज जो है दिन के 2 बजे गालिबन एक और मैच खेला जाएगा, लेकिन आप हमें दिन के दूसरे मुकाबले में हमारे साथ जुड़िएगा। एक बड़ा फाइनल मुकाबला होगा सुल्तान वॉरियर्स रोहमा और ग्रीन लाइन नाइट खाई के माबैन। लोन आबिद नए बल्लेबाज के लिए गेंद को खेलना चाहा था, ऑफसाइड की जानिब गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हैदर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद और इस मतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक लेकिन महफूज, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाके गिरी है। 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, 6 रन का इशारा आता हुआ, और इन 6 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल होते हुए कुल मिलाकर जो है स्कोर यहाँ पे 102 हो चुका है। 102 लोन आबिद बॉलिंग मार्क पर, और सामना करेंगे एक मतबा फिर उनकी गेंद का नए बल्लेबाज जो आए हैं जिन्होंने आते ही अपने हाथ खोले, वहीद बट जिन्होंने छक्के की मदद से अपना खाता खोला। तो ओवर मुकम्मल होता हुआ 10 ओवर्स के बाद 102 5 विकेटों के नुकसान पर। And slowly and gradually Rising Star spinner are making a comeback in this game. You could see 6 overs 76 for 1, and now after 10 overs the score on board is 102 for 5. So they got 4 wickets in the meantime and just 30 runs of those last 4 overs. And as you said, Lone Abid, his purple patch with the ball continues as he has got 4 wickets in the middle overs. And you know, in a cricket you always have the chance to come back. Doors are wide open for you. You didn't start well, but in the middle overs you're controlling the game nicely. Picking up wickets has been the man option, and that's what you need to do, as Lone Abid has done everything right, picking up 4 wickets in the middle overs and helping Rising Star spinner to strike back in the game. And in the weighted over number 11, it's 107 on board for the loss of 5. And the plus point for Zanigir Stars is that Tawheed is still there and he is standing rock solid, batting on 55. A brilliant innings going on as Waheed faces the next ball, just taps it on the offside. They have a fielder inside the ring and there is no chance of a single. And Chandel Shakil is watching the game, and Zubair Dar as well. Yeah, this is the sports field of Paripura, you guessed it right. In the meantime, next ball, and pushing it further up and trying to aim at the stumps as the batter pushes it off the back foot straight to the bowler, and there is no run at all. A good over going on, and Asadullah then for 7, and he's in his over number 2nd. Goes over the stumps once again, rocks back, tries to cut but doesn't time it well. A lack of timing on that as he skews the ball off the inside edge. Roll is down to point and there is no chance of a run. A good over going on, and Asadullah bowling in the middle overs. It has been a good exhibition of spin bowling by Asadullah, and then Lone Abid as well, both the spin bowlers doing it nicely in the middle overs. As 11 overs have gone, it's 107 for 5. 6 more overs to go, and they will be trying hard to go up to 160, 170. Knowing that it's just a 17 over game per side, but Rising Stars Binir is a formidable side and they will fancy their chances to chase the score down on this good batting wicket as well. It's 107 for 5 after 11 overs. Abid got 4, Asadullah bowling 2 tight overs here, and that is where Rising Stars Binir will look to have a hold at this game as Ayub will continue.
his 2 overs. He was a bit expensive, but will look to replicate a good performance here. Starts with a foolish delivery as he drives to Lonabe that covers, and there is no chance of a run. Run a ball 6 for Wahid, and Tawheed has been an aggressive batter, batting on 55. As Ayub gets ready once again, lofts him away. He hasn't timed it. It's up in the air. Could be a wicket. Oh no, it has been put down by the deep mid-wicket fielder. And a set batter has been given the life. Set batter gets the reprieve. As mid-wicket fielder, he got under the ball, got his hands as well. But unfortunately, he wasn't able to hold on. Puts on a very simple catch. Next ball just turns away from the batter, was just trying to dig that one off the back foot, and he gets beaten. Good going for Ayub in this over. He could have has a wicket as well, but unfortunately the fielder not supporting there at mid-wicket region, and Tawheed getting the life as Ayub goes again. Quicker, wider outside off, and drilled over extra cover boundary for a 6. And finishes over on a high, finishes over with a 6. That is a fantastic strike. That is a beautiful strike as he lofts him away for a 6. 12 gone, and we're still in over number 12. We have 2 more deliveries left. I don't know what are the issues with Creek Heroes today, as the scorecard isn't getting updated on each and every ball, and gets updated lately. It's 114 for 5 as Wahid gets the 6. A terrific strike that was, as Ayub none for 20 until now, as he goes for the penultimate time. Backs away, shuffles across, scoops that one fine, but there is that deep mid-wicket fielder who tidies things up and keeps the batters down to 1 only, takes the score to 115, as Ejaz Khan, Chandel Shakil, and rest of the viewers, Mir Javed watching from Harvan Sopor, Walaikum Salam. We got Chandel Shakil watching from Jammu as well, and is sending in best wishes for Janagir Stars, I guess. Thank you very much each and everyone for joining the live broadcast, as 12 overs have gone. It's 115 for the loss of 5. Tawheed, who stands rock solid there, batting on 56 or 41, and he has been the man who is holding the innings together, who is holding the innings tight, and at the other end he's letting the batters to free their arms. They have the chance now, as you know, with 5 more overs to go. The fresh over begins. Asadullah to continue, hits it in the air. An extra bounce, and it nearly hits the splice of the bat. It was in the air for a while as it drops short of the fielder, scorching in, swooping in from point, and will go down as a dot. 4 more overs left after that. Asadullah goes full as he goes straight over the bowler's head, and Tahir plucks out an absolute blinder at long on. It is an absolute screamer by this man, and what else he cannot do in the field. He is doing everything. A terrific top order batter, and now pulls out an incredible grab at long on. I thought the ball will carry over the ropes. I thought the ball is going over the ropes and it will carry the distance. Tahir has other plans, and he has been adored. He's been clapped by the opposite team mates as well. That was the beauty of this catch. A terrific running catch, and Wahid departs. A powerful striker of the ball. Wahid looks to go over long on, and he looks to clear the fielder, but Tahir was the man, and he's already got 3rd catch of the day. 3 catches he has taken. A superb fielding effort, and we call it athleticism at its best. It was a Bobby Dazzler from Tahir Mir as Wahid departs back to the pavilion. It's 115 for 6 now, as Rising Star spinner are finding those ways of coming back into the game. Wickets in the middle overs, and that is what has been the plus point, and the spinners doing their job, and spinners making those batters toil hard for the runs, as 6-1 departs as well, as Uwais Bashir
welcoming you to the live stream, brother, and he's watching from Kapura. Chandil Shakil watching from Jammu, and Ejaz Khan as well. And Daramir, it is here at Green Park Paripura, which is hosting the final of Dandoosa Premier League, as the new batter makes his way down the centre edge, and it runs away down to third man for 4. No slip, no third man, and these are 4 runs for the batting side. It's 119 for 6, as Asadullah won't be a happy man, won't be a pleased man there, as he got a wicket of the previous ball, and now the thick edge flies down to third man boundary. It's 119 for 6. Asadullah in his third. A slower delivery up in the air. A chance again. Wicketkeeper and bowler calling, and wicketkeeper has put this one down. And Tahir from long on was screaming, let wicketkeeper take the catch. He's the man who's got the gloves on, and it was his call to take the catch. But bowler comes in way, Asadullah, and the catch has gone down. And Tahir is in a happy man, and he should be there, because it was a chance to get one more wicket here. But unfortunately the catch goes down. Daramir, I will let you know the exact reasons. As you know, Dandoosa Premier League is the final, and that ground is located in the middle, in the lap of those Orchard Fielders. And the organizer just had the stipulated time to complete the tournament, and unfortunately, due to those unknown reasons, he wasn't able to complete the tournament in the given time. And then the tournament was scheduled to be played at Chaklu Sports Field, and again there were some barriers, there were some hurdles, and that is why it wasn't completed there, and now the venue has been shifted. So you got the answer. And in the meantime, a single takes the score to 121 for 6. It could have been a chance to send back Faisal Pandit as well. Wicketkeeper and bowler failed to call each other properly, and the catch went down. 13 overs gone. It's 120 for the loss of 6. शुक्रिया फिरदौस, आपका कुल मिलाकर 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 120 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में जैनगीर स्टार्स का, और फैसल पंडित ने 5 रन बनाए, जबकि 56 रन पर खेल रहे हैं तौहीद बट। अब देखना होगा इरफान लोन के बाद किस गेंदबाज को बुलाया गया है। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डार आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद 14वें ओवर की पहली गेंद को खेल दिया बैक फुट पर। फील्डर मौजूद, शॉर्ट कवर पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। आबिद फील्डर, और बॉलिंग मार्क पर है इरफान लोन। इरफान लोन छोटे से रनअप के साथ एक मतबा फिर गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस किया तो, और गेंद जो है थोड़ी नीचे रहते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जैनगीर स्टार्स का स्कोर इस फाइनल मुकाबले में 120, 6 विकेटों के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल जारी, और बॉलिंग मार्क पर इरफान लोन, जो अपना तीसरा और पारी का 14वां ओवर फेंक रहे हैं। इरफान सामना करेंगे फैसल पंडित उनकी गेंद का। ओवर द विकेट, गेंद की बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया ऑन साइड की जानिब। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद ताहिर मीर, उन्होंने गेंद को फीड किया। रन बनाने का मौका, दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 121, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब तौहीद बट 56 रन पर खेल रहे हैं। सामना करेंगे इरफान की गेंद का। अच्छी गेंद, क्विकर, और इस मतबा गेंद जो है बैक विकेट कीपर विकेटों के साथ चिपके हुए पूरी तरह से सफाई के साथ रोक नहीं पाए, और अब आहिस्ता आहिस्ता गेंद गेंदबाज के हाथ में। अगली गेंद, इस मतबा गेंद को निकाल दिया ऑन साइड की बल्ले का अंदरूनी किनारा, और स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर गए, उन्होंने गेंद को फीड किया। 1 रन बनाने का एक मतबा फिर मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 122। 14वें ओवर का खेल जारी। 9वें ओवर तक रन रेट जो थी वो 12 या 13 से ऊपर थी, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, अच्छी वापसी करते हुए राइजिंग स्टार बिनर की टीम, और अब जो रन रेट है वो 10 के नीचे आ चुकी है। 122 स्कोर। 14वें ओवर का खेल जारी। अगली गेंद, एक मतबा फिर हवा में शॉट, और फील्डर गेंद के नीचे शॉट कवर पर, फील्डर के सीधे हाथ में मौजूद थे आबिद वहां पर, और यहां विकेट गिरती हुई।
एक और विकेट गिरी है और आउट होने वाले बल्लेबाज फैसल पंडित 6 रन बनाकर आउट हुए 8 गेंदों का सामना करते हुए और 122 के स्कोर पर यह 7वीं विकेट गिरी है। वसीम परे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चकलू ग्राउंड जो है वहां पर कुछ जो है मैच मुनक्कद कराने के हवाले से ऑर्गेनाइजर्स का कुछ जो है वहां पर उन लोगों के साथ या कहा जाएगा क्रिकेटर्स के साथ कुछ अनबन हुई और उस वजह से मैच को शिफ्ट करना पड़ा यहां परेपोरा ग्राउंड में। फारूक लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैच कहां पे है? मैच इस वक्त जारी है ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स ग्राउंड चकलो परेपोरा रफियाबाद में। 122 7 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज आए हैं फैजान जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब कैसर मीर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर और पारी का 15वां ओवर फेंकेंगे कैसर मीर। सामना करेंगे उनकी गेंद का तौहीद बट। तौहीद बट जो है वो सामना करेंगे कैसर मीर की गेंद का। 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 122 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। तौहीद बट इकलौते ऐसे बल्लेबाज जैनगीर स्टार्स के जो इस वक्त 57 रन पर खेल रहे हैं 43 गेंदों का सामना करते हुए। बॉलिंग मार्क पर कैसर मीर। मुन्ना यतू हमारे साथ जुड़े हैं, वसीम परे भी जुड़े हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर मीर 15वें ओवर की पहली गेंद के साथ तौहीद बट के लिए ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल, 2-3 कदम आगे आए थे लेकिन इस मरतबा गेंद को काफी पीछे पिच किया गेंदबाज कैसर मीर ने और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तान में। मुन्ना यतू बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद लंगेट से हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 15वें ओवर का खेल मुकम्मल जारी है और 122 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। तौहीद 57 रन पर खेल रहे हैं 44 गेंदों का सामना करते हुए। एक मरतबा फिर सामना करेंगे कैसर मीर की गेंद का। कैसर तौहीद के लिए ऑन साइड की तरफ देखना होगा, क्या गेंद बल्लेबाज के पैर को छू गई है? जी नहीं, बल्कि हेलमेट को छूने के बाद जो है गालिबन गेंद उनके हेलमेट में जाके लगी और वहीं पे रुक गई। तो अब मुख्तलिफ जो फील्डर है वो उनके पास जाते हुए हम भी उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा चोटिल नहीं हुए होंगे वहां पर तौहीद बट। गेंद जो है उछाल लेती हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है ऑन साइड की तरफ गए थे गेंद को खेलने के लिए, लेकिन गेंद जो है हेलमेट के अंदर जाके घुसी और देखना होगा ज़्यादा चोट न लगी हो। हम ऐसी उम्मीद करेंगे सभी खिलाड़ी उनके पास जाते हुए। जी हाँ, तौहीद बट अब बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए। 122 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल जारी। परे इसहाक हमारे साथ जुड़े हैं, वेल प्लेड, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना यतू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए लाइव नशरियात में। और लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। आपको बताना चाहेंगे कि यह फाइनल मुकाबला डंडूसा प्रीमियर लीग का इस वक्त जारी परेपोरा स्पोर्ट्स फील्ड पर। कैसर मीर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट गेंद की और इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में शॉट, लेकिन महफूज और गेंद 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। यह तौहीद बट के बल्ले से आने वाला एक और छक्का। तौहीद बट का जाती स्कोर जो है वो हो चुका है 63, जबकि इंफरादी स्कोर 168, मजमूई स्कोर 168 हो चुका है। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए तौहीद बट इकलौते बल्लेबाज 63 रन पर पहुंच चुके हैं 46 गेंदों का सामना करते हुए और मजमूई स्कोर जैनगीर स्टार्स का 128 7 विकेटों के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल जारी। 17 ओवर्स पर यह फाइनल मुकाबला मुश्तमिल। अगली गेंद कैसर मीर की, लंबा बॉलिंग रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक मरतबा फिर ऑन साइड की जानिब और एक और देखना होगा क्या छक्का या चौका। जी 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई। एक और चौका आता हुआ तौहीद बट के बल्ले से
और स्कोर बढ़ता हुआ 132 हो चुका है। मौका मिला यहां पर गेंद को ऑन साइड की तरफ भेजने का और भरपूर फायदा उठाते हुए पुल शॉट हमने देखा कि तौहीद भट्ट का बेहतरीन टाइम के साथ खेलते हैं और खान बाबू भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब एक मरतबा फिर कैसर मीर तौहीद के लिए गेंद को एक मरतबा फिर खेल दिया है और इस मरतबा पहले से बड़ा जो है छक्का आता हुआ। गेंद मैदान से बाहर, गेंद मैदान से बाहर जाते हुए और 6 रन्स के लिए और तौहीद भट्ट के बल्ले से आने वाला यह तीसरा छक्का। उनका इनफरादी स्कोर 79 हो चुका है, बल्कि 73 हो चुका है और मजमूई स्कोर 138 हो चुका है। 138। अब खान बाबू भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तौहीद भट्ट एक मरतबा फिर कैसर की गेंद का सामना करेंगे। कैसर मीर ने इस ओवर में कुल मिलाकर 16 रन दिए हैं, 48 रन दिए 2.5 ओवर्स में कैसर मीर ने। काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए आज के इस फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार विनर के लिए। कैसर ओवर की आखिरी गेंद और इस मरतबा पटकी हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ता में। व्हाइट बॉल का इशारा और स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 139। 7 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर की अब आखिरी गेंद, बल्कि 5वीं गेंद दोबारा से, बल्कि आखिरी गेंद दोबारा से फेंकनी होगी कैसर मीर को। कैसर आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए। तौहीद भट्ट 73 रन पर खेल रहे हैं 48 गेंदों का सामना करते हुए। सामना करेंगे कैसर मीर की गेंद का। 139। 7 विकेटों के नुकसान पर जैनगीर स्टार्स का स्कोर। अगली गेंद और इस मतलब डॉट गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। कुल मिलाकर कैसर मीर का ओवर मुकम्मल होता हुआ महंगा ओवर, जिसमें कुल मिलाकर जो है 18 रन आए। टाइटन ट्रेडिंग रोहामा से कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, वसीम परे भी हमारे साथ जुड़े हैं खान बाबू के साथ। और यहां जो है 15 ओवर्स के बाद 139। 7 विकेटों के नुकसान पर मजमूई स्कोर जैनगीर स्टार्स का। So we are witnessing a solo performance from Tawheed Bhatt's bat. 73 and more than 50% of runs have been scored by him alone. It's a solo performance and he is putting on a show with the bat, and you can see it has been a forgettable day for Kaisar today. He has conceded nearly 50 runs in his 3 overs. Had been way too expensive, and the short and the fast bowlers especially have been very expensive. They leaked runs. In the meantime, the ball is up in the air and it is a simple catch at wideish long off as is first of the day, and they have lost their wicket number 8. Faizan walks back to the pavilion, and it's 139 for the loss of 8. As another wicket falls, and this has been a sensational display of batting. And Tawheed Bhatt, as I said, it has been a solo show. It has been a solo performance with the bat, and he alone has handled things out. He has been too hard to handle for the bowlers of Rising Star spinner. And incredible efforts with the bat, and he is alone. Playing a lone hand. He's been the warrior for the side of Zenigir Stars. As Wasim Pare and Khan Babu and a couple of viewers, couple of friends watching from Titan Trading Rohama as well. And he's mentioning that we have those angle irons, we have those construction materials available at reasonable rates. So Pare Ayub, he gets wicket off the first ball of his fresh over, and he's bowling his final. He's going to finish his quota here as Danish Lun walks down the centre at number 10. Still a good score on board. It's just a 17 over game per side as Ayub gets ready to the new man. Danish Lun gets ready to face him for the first time. A quicker delivery, and Ayub is appealing to the umpire, and he is mentioning he's just going to the leg umpire to have a word. And wicket-keeper was damn confident. He was straight away up, appealing and pleading. So was the bowler,
and those close-in fielders at gully and point, I guess they heard a noise, and the standing umpire is having a word with his partner there. What is the decision? We'll have to wait and watch. And I guess not out is the signal, and he declines the appeal. And I can say the reaction of the bowler there, he is devastated, and he's given him out now. And he was waiting for the signal, and I thought Ayub thought there he is signaling not out, but now out comes the decision, out comes the signal, and it is the wicket. 9th falls as Danish departs on the very first ball. So they have the chance to wrap up the innings now and to chase down the target. And in the meantime, an absolute drama happening at the centre, as there was a loud shout up caught behind. As wicket-keeper, as I said, he was sure. So does the bowler and the close-in fielders. There was a noise, I guess. That is why they were absolutely confident of that appeal. And then the standing umpire signalling to the leg umpire, and they both were having a word, and it took a lot of time, as the reaction of the bowler, I thought that he was giving it a not out, and then the bowler was having a word with him, then up goes the finger all of a sudden, and Danish walks back, and he isn't a happy man as well. It's 9 down now, and you know it has been a great comeback. It has been a spectacular comeback. Rising Star has been here. You know the situation of the game: 6 overs, 76 for 1, and last 10 overs have just yielded nearly 7 runs and 8 wickets. That is where Rising Star has been here, have been ruthless with the ball. They have been absolutely on the roll with the ball, and those couple of drops chances in the midst as well, but that still has been a good game for Rising Star spinner, as Ayub will look to wrap up the innings, as he's on a hat-trick. Hat-trick ball is coming up, and just short of the fielder at short third man, and he makes a half stop, and in the meantime the batters cross for a single, and the single takes the score to 140 for the loss of 9. So talking about Tawheed, but as I said, it has been a solo performance. He has been the lone man, fighting it out, sweating it out, and he has given the bowlers of Rising Star spinner a befitting reply today with his bat, as Ayub almost clean bowls the batter as the ball just goes past the off stump. Wicket-keeper lets the ball to go through the legs and runs away down to the third man boundary for 4. Should have been stopped by the wicket-keeper. I guess he thought it was mighty close to the stumps and it might disturb the timber, and he was dejected, he was deceived, and the ball runs away down to the boundary for 4. 144 it is, just one more over left after that. Just 2 deliveries left as Ayub goes again to Tawheed, launches him on the onside. It's up in the air and has gone all the way for a 6. A beautiful strike, a tremendous strike of his bat, and he has absolutely nailed this log sweep, and it goes over mid-wicket fence for a 6. These are crucial runs, handy runs at the back end of the game, at the fag end of the game. And as I said, it has been a one-man show with the bat. Tawheed's brilliance continues as he finds the fielder inside the ring. 16 gone. It's 150 for 9. Just 6 more deliveries to go. 150 for 9 as Tawheed batting on 79 of just 52 bowlers. An incredible and a mammoth innings from him, and he was the man who has been a strike batter, came in as an opener and is still batting out there, and credit to the good stamina, credit to the fitness levels as well. And in this scorching heat, he is battling it out, he is sweating it out, has played an absolute gem of an innings, has played an absolute masterpiece with the bat, masterclass coming out of his bat today for the team. And you can see nearly 80 runs, so rest of the 70 runs have been scored by those 9 batters. As first ball of the fresh over, he pushes it down to short cover where Lonabid is fielding. There is no addition to the total. It's Irfan Lon who will finish this innings with a final over, as Zia Manhas
Well done, Tawheed, sending in love and appreciations. Next ball, a flighted delivery. Tries to just get a single and bring Tawheed back onto the strike. That's what you need to do here. He's hitting the ball well, he's timing it well, and he is just seeing the ball like a football. As Firdaus Ahmed needs to understand, or otherwise you just try to go for the big shot, and he does so. He gets a single and brings Tawheed back on strike. If you're not going to give him the strike, just swing the bat, see if he can connect a couple of hits and get some runs. But now he's done a good job. He's brought Tawheed back on strike. Are we going to witness some biggies off his bat? Now we're going to witness a couple of towering sixes. Here comes the shot, but it's a leading edge. It's a top edge rather. And it runs away down to third man boundary for 4. That is why Zanagir Stars, they were asking the batter, they were calling the batter, just rotate the strike, bring Tawheed on strike, and he gets a boundary, even though it wasn't a convincing one. Manages a top edge, it rolls over that third man with all the fielders on the offside, at the square side inside the ring, and the ball has gone down to the boundary. 2 more balls to come, goes onside again, and he isn't trying to steal a single, even though he could have gone for 2 more runs there as the ball stops inside the ring, and the long on and deep mid wicket fielder, they are at the edge of the boundary, but they decide against the single as a final ball is coming up. 155 for 9. His lone goes for the final time, and Tawheed gets beaten, and the dot ends the innings as well. So they have finished it on 155. Rising Star has been in it 156 in their allotted 17 overs to lift to the title of Dandoosa Premier League. So we will be back after a short little break with the chase of Rising Stars. तो दोबारा से आप सब व्यूअर्स का खैर मकदम करना चाहेंगे। यहां पर रन चेज में उतरी है राइजिंग स्टार बिनर की टीम। जीत के लिए दरकार 156 रन, मुकर्ररा 17 ओवर्स में। फैजान को लगाया गया है बॉलिंग मार्क पर ज़ैनगीर स्टार्स की जानिब से। दूसरी पारी का पहला ओवर फेंकेंगे और दोनों सलामी बल्लेबाज ये जैक डार और लोन आबिद जो है वो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जैक डार जो है वो सामना करेंगे गेंदबाज फैजान की पहली गेंद का। दूसरी पारी की पहली गेंद और फैजान है बॉलिंग मार्क पर। फैजान पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया जैक के लिए। 2-3 कदम आगे आए थे और यहां पर गेंद को खेला शॉर्ट स्केलर की जानिब। वहां पर फील्डर मौजूद थी, इस गजारे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी तैनात, जबकि ऑफ साइड पर कुल मिलाकर जो है 6 खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर स्केलेट बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी जो है दायरे से बाहर है। और अब फैजान एक मरतबा फिर सामना करेंगे जैक डार, उनकी गेंद का। 156 रन चाहिए डंडूसा प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करने के लिए राइजिंग स्टार बिनर को। दूसरी पारी का आगाज होता हुआ और देखना होगा किस तरह का आगाज फराम होता है यहां पर राइजिंग स्टार बिनर के लिए। फैजान ऑप्शन से बाहर, गेंद पर थाई को छूने के बाद गेंद वहां पर ओवर थ्रो, यहां थ्रो जो लगा था अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो नजदीकी मामला बन जाता। फैजान खुद गए थे थ्रो लगाने के लिए क्योंकि फील्डर जो है काफी पीछे खड़े थे और 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ राइजिंग स्टार बिनर का। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। फेसबुक पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी, यूट्यूब पर फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क और यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी। फैजान बॉलिंग मार्क पर, रन जो है ये लेग बाई की सूरत में हासिल हुआ और अभी तक बल्ले से रन नहीं आया राइजिंग स्टार के लिए। राइजिंग स्टार बिनर की जानिब से अब अगली गेंद आबिद के लिए और इस मरतबा गेंद जो है बल्ले के बाहरी किनारे को छूने के बाद गली की जानिब गई, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। लोन आबिद और जैक डार जो है वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। लोन आबिद सामना करेंगे फैजान की गेंद का। फैजान लेग बाई की सूरत में रन हासिल हुआ और खाता खुला राइजिंग स्टार का। फैजान को कुछ सलाह मशवरा देते हुए उनके साथी खिलाड़ी, और देखना होगा लोन आबिद जो है वो सामना करेंगे उनकी गेंद का। राइजिंग स्टार बिनर के पास एक अच्छी खासी
बैटिंग लाइनअप, जिसमें आज जो है हैदर हालांकि नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी असदुल्ला है, मीर ताहिर है और भी कुछ खिलाड़ी है, जबकि लोन आबिद है जो इस वक्त सामना करेंगे फैजान की गेंद का। फैजान बॉलिंग मार्क पर तैयार, ओवर में अगली गेंद के साथ 156 रन दरकार 17 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए, बल्कि फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल गेंद को खेलना चाहा था, ऑन साइड की जानिब गेंद जो है उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 2-3 कदम आगे आए थे गेंद को खेलने के लिए लोन आबिद। फैजान आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जानिब वापस जाते हुए, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा फैजान की जानिब से। फैजान आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क पर, लंबा बॉलिंग रन फैजान का। पारी का पहला ओवर फैजान फेंक रहे हैं जैनगिर स्टार्स की जानिब से। एक मतबा फिर आबिद सामना करेंगे उनकी गेंद का। गेंद को खेला हमारे कमेंट्री बॉक्स की जानिब आती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। तो आबिद के बल्ले से आने वाला ये पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 5 जैनगिर स्टार्स का बिना किसी, बल्कि राइजिंग स्टार विनर का बिना किसी नुकसान के। 5 मजमूई स्कोर। आबिद ने अपना खाता खोला चौके की मदद से। अब फैजान एक मरतबा फिर ओवर में अगली गेंद के साथ लोनाल के लिए, इस मरतबा ऑन साइड की जानिब ग्लव से टकराने के बाद गेंद फाइनल की जानिब गई। फील्डर गेंद के पीछे, विकेट कीपर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज। एक और चौका आता हुआ और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9। पहले ओवर का खेल जो है अब जारी है और बल्कि मुकम्मल हो चुका है। 9 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के। The first over of the chase is done, and a couple of boundaries in the first over, couple of fours takes the score to 9, as the asking rate at the start of the innings is just over shade over 9. So they will fancy their chances, the kind of batting depth they have, the kind of batting firepower they have. Jack Dar and Abid Lone are out there, and they still have good batters to come. We talk about Irfan Lone, talk about Parey Ayub, Tahir Mir is still, and they have Mir Asadullah in the lineup as well. Promises to be a good encounter today, and the finals of Dandoosa Premier League for the final time in this year. They are fighting for the title of that mega edition. And in the meantime, the second over begins. Firdaus Ganai has been introduced into the attack, and on the offside he has a lone slip waiting as wicketkeeper is up to the stumps, and 4 fielders close to each other. First ball and hits it down to long off, was in the air, but it is well short of the fielder, and the batters cross for a single. First runs on the board of Jack Dar as he gets the single, and Lone Abid couple of fours batting on 8. Long on and long off are out, so you can afford to be a bit fuller in the in this over. So on the onside he has mid wicket in place inside the ring, and there is one fielder at scare leg, and on the offside he has point, gully, cover and extra cover. With this fielder set, as Firdaus Ganai starts the proceedings of his first and overall the over number 2 of the chase. 156 in their allotted 17 overs to lift the title. As I said, it is for the final time in this year that Dandoosa Premier League, they're fighting against each other, fighting for the title. And next year it will be again, because due to the restrictions in the ground, they are allowed to organize the tournament in just at least 1.5 months time. In the meantime, goes cross bat, it goes onside and into the fence for 4. Lone Abid is on the charge, and his purple patch continues with the bat. He's been in a breathtaking form in recent times, scoring runs at will, and he's just churning out runs, and he's been, all I can say, the master with the bat for Rising Star has been for the side of Binner as well in couple of months time, and he is now showing that glimpses of character with the bat. 3 fours off his bat moves to 12, and he takes the score to 10 without loss, as Firdaus goes over the stumps once again to Abid, shuffles across, winders, and that is a huge 6. Walking across the stumps, picks the length early and dispatches that one away, sends the ball sailing into the mid-wicket boundary for half a dozen.
A magnificent strike off the bat of Lon Abid. And I told you the man is in a red hot form. And his purple patch continues with the bat. 18, 3 fours and a towering 6 off his bat. And it takes the score to 20 without loss. To win the game, Zenigir Stars, they need to target this man. He is in his form of his life. And that was a mighty heave, and that has gone the distance. All those sixes which have been hit in this innings until now in this match from the side of Zenigir Stars, this one has gone many a mile. It's a monstrous hit. And this has gone way back out of the ground and into that small little orchard. A towering 6, a skyrocketing 6 off his bat, and it takes the score to 20 without loss. And straight away he's on the charge. He means business there, and he is so dangerous at the top of the order. And what makes him that dangerous, what makes him so explosive, is his good hand-eye coordination. He's a natural and sweet timer of the ball, and a bit of extra time he has again as those pace bowlers makes him so explosive. Firdaus goes again, wraps him on the pad, and up goes the finger. The danger man departs. The big man has to walk back. And again he was shuffling across the stumps. The ball was heading towards the stumps. And Abid isn't happy at all. He's just showing that the ball hits him on the thigh. But to me it was very close to the necktie. He was shuffling across. He was walking across. And umpire raises his finger. Rising Star spinner lose their first, and it is the man who was in form departs, who was in form walks back to the pavilion. Couple of beautiful shots, couple of gorgeous shots, and a show ends here. Done and dusted for the day. Lon Abid walks back to the pavilion. And let's take a look at the replays of the LBW shout. We have the close-in angle available. If we have, we will try to show it out to you. But he is back to the pavilion. And I guess he was plumb in front by walking across the stumps. It was a good slower delivery. It was a deceiver as Firdaus slips in a slower ball. He read the mind of Abid, who was continuously trying to go for the big shot. And what the viewers who are watching the game, what do you reckon? The viewers, as you can see the close-in angle as well. And Lon Abid shuffling across the stumps was found in front of the stumps. He walks back to the pavilion as Tahir Mir walks down the centre at number 3. As Jackdaw got the promotion today to bat up the order. And Tahir will bat at number 3. Uwais Rasool sending in love. Thank you very much, brother, for being there at the part, staying connected with Global News Network, as you can watch on YouTube as well. And you just need to search JK Sports Discovery, and you can enjoy the live broadcast as Firdaus draws the first blood, and he has the first wicket for Zenigir Stars. 20 for 1 as he goes over the stumps for the first time to Tahir as he drives the ball nicely on the up, and he finds that fielder inside the ring, and there is no chance of a single. And Lon Abid, absolutely, that was clearly in front of the stumps. He was walking across, and I thought that was mighty close to the necktie. And Abid is spot on there, says it was clearly out. And Azur Ghazi Irfan, walaikum salam. Hilal Ahmed, walaikum salam, watching from Panzla. 2 overs off the chase, done and dusted. And it's 20 for the loss of 1. Lon Abid started with a flurry of boundaries there, a ferocious start he got, but he was trapped in front of the stumps. In that over, it was a successful over as the well-set batter departs back to the pavilion. An early wicket for Zenigir Stars. They will look to stop the run flow. They will look to restrict the batters of scoring freely. But you know, Tahir, the kind of talent he is, the kind of serious talent he is, and they will be looking to get his wicket early on, otherwise it will be really tough to stop this man. And at the other end, Jackdaw will look to get a partnership with Tahir here as Ghazi Irfan, thank you, Riaz Parra and Zubaydar sending in love for Faizan. A good shot ball to Jackdaw. He was trying to pull him on the onside,
A big top edge pops up in the air. A well shot of the fielder at mid-on, though the batters cross with a single, and it takes the score to 21. And they need a good partnership to get things going, and Tahir has got a lot of responsibility to carry the innings forward as he faces Faizan for the first time. And tries to go onside, a bit of pace onto that delivery as Tahir fails to ride the bounce as the ball beats his pad and goes into the gloves of wicket-keeper. We're in over number 3 and in pursuit, in chase of 156 Rising Star spinner, 21 for the loss of 1. Zubaydar is sending in love for Faizan. Azu Azhar, walaikum salam, to share this live broadcast, dear viewers, so that other viewers can enjoy. Short delivery as he swats this one away and goes down to covers. There is no run again, and Tahir is yet to get off the mark. And no, it is not the first innings, Ghazi. They are chasing and they are behind the target of 156. And the stage is set. In the meantime, it's Azan time going on. So just enjoy the visuals.
It's died or side in Pandit. Vitia, Gumitsuri match. Doma Pataka for need. Binvik is Gumitur by Yunus Anna. He is winning. Welcome back after the Azan break, as the viewers were commenting down about the sound problem. We had the microphones down for a while because Azan was going on. It was called to prayer, and in the meantime, couple of delicious shots coming off the bat of Tahir's 14 as he gets ready to face. Down he comes and goes back past the ball down to long on. There is a fielder as the batters settle for a single. A good start. We're in over number 4, 36 for 1. Tahir batting on 15. 4 overs gone, 37 for 1. And they're going neck to neck to the run rate, the run chase as well. And Munna Munib, brother, it was Azan going on. That's why we had our microphones down. Ghazi Irfan, he is mentioning the bowlers are bowling bit short, and that is why they have been punished. They are being punished until now. And Khan Mohsin Lun Abid is the man who is back into the pavilion. He started well. He started in a positive note. Couple of boundaries and a 6 coming off his bat. But he is back into the pavilion. And Wasim Pare and Adnan Sanaya, Walaikum Salam and welcome to the live stream. In the meantime, Zanagir Stars. Faizan gets ready with the first ball outside off. A bit of extra bounce as Tahir was trying to drive the ball on the up. And he gets beaten due to the extra bounce in pace, and it goes into the gloves of wicketkeeper. Welcome each and everyone as Ghazi Irfan, Munna Munib and the rest of the viewers who are watching the game to share the live broadcast. And in case you're watching it on YouTube, just search JK Sports Discovery and subscribe the channel as well. As fifth one begins, Faizan goes to Tahir. He winds up onside and goes one bounce into the scallop fence for 4. He can't bowl onto the pads of this man. He is so strong. He is so dangerous at that side as he just flashes the ball on the onside and goes one bounce and into the boundary for 4. 41 for 1. As Tahir looks on the charge. And he is well set for a big score today. Couple of fantastic shots coming off his bat. We've seen that lofted extra cover drive was a beauty of his bat. And then scooping one over fine leg, and now he goes across the line. He goes onside, goes for a boundary. Takes the score to 41 for 1. As I said, need to get this man early, otherwise he can be so dangerous. Backs away and smashes that one over extra cover and one bounce into the fence for 4. Exposing all the stumps this time, Tahir. He has that ample time to smash that ball. The time he has scored, the timing this man has, and he's got all the shots in his book, and he's showing his sheer class. He's showing his sheer brilliance with the bat. 45 for 1, and Jameel Ahmed is watching us from Hidden Beauties, and another super talented man who has done a great job. He also broadcasted live matches on his official page, Hidden Beauties. And thank you very much, brother, for your backing, for your appreciation. Down comes Tahir. It's up in the air. Could be a wicket here. It's up and gone. Tahir goes. He was trying to go for the big shot. Miscues it up in the air. A long off fielder runs in, takes a superb catch as the man informed the danger man departs as well. 45 for 2. He was looking set for a big score today. But again, he tries to be explosive. Gets it off the toe end of the bat, and it's a fine running catch from the long off fielder. One more departs, and it's 45 for 2. शुक्रिया फिरदौस। तो 45 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर फैजान के खाते में जाने वाली ये पहली विकेट, बल्कि दूसरी विकेट। और यहाँ वसीम परा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैं मीर खालिद भी जुड़े हैं जुनैद अहमद के साथ, और इनके साथ साथ
अदनान सानिया हमारे साथ जुड़े हैं, वसीम परे बहुत बहुत शुक्रिया, खान मोहसिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। 45 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 156 रन के ताकुब में राइजिंग स्टार बिनर का, और 2 जो बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं, टीम के मंजे हुए बल्लेबाज मीर ताहिर और आबिद, ये 2 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। 45 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी है, 5वें ओवर का खेल जारी है और 4.4 ओवर्स के बाद 2 विकेटें गिरी है 45 के स्कोर पर। फैजान 5वें ओवर की 5वीं गेंद के साथ नए बल्लेबाज इरफान लोन के लिए, और इस मरतबा गेंद जो है विकेट कीपर गए थे कैच लेने की सूरत में, लेकिन गेंद एक दफा पहले उनसे गिरी और 45 मजमूई स्कोर। फैजान बॉलिंग मार्क पर, फैजान का ये ओवर कामयाब ओवर साबित होता हुआ अभी तक इस ओवर में 1 विकेट हासिल की, 8 रन के एवज 2.5 ओवर में फैजान ने कुल मिलाकर 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। वसीम परे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इरफान लोन एक मतलब फिर सामना करेंगे फैजान की गेंद का। फैजान जो है अपने स्पेल का 3रा ओवर फेंक रहे हैं और 3रे ओवर की आखिरी गेंद के ऑप्शन से बाहर, बहुत ही खूबसूरत कट और हवा में लहराती हुई गेंद, पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए। ये छक्के के साथ अपना खाता खोला इरफान लोन ने और स्कोर बढ़ता हुआ 51, 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल। बैकफुट पर बेहतरीन अंदाज से गेंद को खेला और 6 रन हासिल किए। मिस्टर हिलाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फैजान का ओवर मुकम्मल, 3 ओवर किए, 32 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। फैजान ने 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 51 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इरफान लो ने 6 रन बनाए, जबकि जैक डार ने 3 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए। अब शब्बीर पंडित को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। शब्बीर पंडित पारी का 6ठा ओवर फेंकेंगे, इनफरादी तौर उनका 2रा ओवर। पहले ओवर में 7 रन दिए शब्बीर पंडित, हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक और बोल्ड कर दिया है। हालांकि 1-2 कदम आगे आए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया और गेंद सीधे मिडिल स्टंप को छू गई और ये तीसरी विकेट गिरती हुई यहां पर जैक के डार के रूप में। जैक डार जो है आउट होने वाले 3रे बल्लेबाज बने राइजिंग स्टार बिनर के। जान मोहम्मद रजा कानिसपुरा टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वसीम परे के साथ मीर खालिद भी जुड़े हैं, जमील अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ अदनान सानिया हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गाजी इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 51 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर 6ठे ओवर का खेल जारी। शब्बीर पंडित ने अपने 2रे ओवर की पहली गेंद पर जैक की सूरत में विकेट हासिल की। जैक डार आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए 3 विकेटें गिर चुकी है राइजिंग स्टार बिनर की। 51 के स्कोर पर अभी भी 105 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए, और कुल मिलाकर जो है यहां पर 71 गेंदों का खेल बाकी। 71 गेंदे, 105 रन दरकार। गुड यॉर्कर ये लिख रहे हैं गाजी इरफान जी, बिल्कुल। और नए बल्लेबाज आए हैं मीर असदुल्ला, एक बड़ा नाम मीर असदुल्ला का, वो आए हैं बल्लेबाजी के लिए और साथ निभाएंगे इरफान लोन का। मीर असदुल्ला शब्बीर पंडित की गेंद का सामना करेंगे। 6ठे ओवर की 2री गेंद फेंकेंगे शब्बीर पंडित जयनगीर स्टार्स की जानिब से। यह डंडूसा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला परेपुरा स्पोर्ट्स फील्ड पर इस वक्त जारी, और इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए जयनगीर स्टार्स ने 155 रन बनाए। अरसलान हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद खालिद भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद, और इस मतबा गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला है, फील्डर के लिए मौका नहीं देखना होगा, क्या बाउंड्री लाइन को गेंद छू जाएगी, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। असदुल्ला ने चौके की मदद से अपना खाता खोला और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ
55 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। जुबैर डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, शब्बीर पंडित की ऑफ स्टंप से बाहर, इस मरतबा गेंद की रफ्तार को कम किया था और गेंद जो है बिल्कुल स्टंप्स के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। असदुल्ला सामना करेंगे शब्बीर पंडित के ओवर की अगली गेंद का, ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, देखा अंपायर की जानिब बैट्समैन है लेकिन अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं और डॉट गेंद। उजैर मीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शब्बीर पंडित पारी का छठा ओवर फेंक रहे हैं, 55 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 101 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए, जबकि इस ओवर के बाद कुल मिलाकर 11 ओवर्स का खेल बाकी रहेगा। शब्बीर पंडित गेंद के ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को छूते हुए 4 रन के लिए। असदुल्ला के बल्ले से आने वाला एक और चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार बिनर का 59 3 विकेटों के नुकसान पर। उमर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये परेपोरा का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इम्तियाज हेयर भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनजान नफर के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की इस मरतबा ऑन साइड की जाने, फील्डर देखना होगा काफी अंदर खड़े थे और एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। असदुल्ला के बल्ले से आने वाला एक और चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 63 हो चुका है। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मंसूर डेकोरेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पहली पारी में आपका जो है एड हमने जरूर चलाया था, लेकिन इस पारी में भी अब जो है आपका एड चलाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आप जरूर देखिएगा कि अब जो है आपका एड स्क्रीन पर आ चुका है। और इम्तियाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मंसूर डेकोरेशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंसूर, आपका एड जो है वो दूसरी पारी में दूसरे फाइनल मुकाबले में हम जरूर जो है डिस्प्ले पे चढ़ाएंगे, जो कि 3 बजे शुरू होगा। सुल्तान वॉरियर्स रोहामा और ग्रीन लाइन नाइट खई के माबेन। जॉन मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं सोइन रफीआबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अरीब एजाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया काजीआबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए इरफान लो ने गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला, रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन मुकम्मल। 7वें ओवर का खेल जारी है, मजमूई स्कोर 64 3 विकेटों के नुकसान पर। 64 for 3. Fascinating session of play going on for Zenegir Stars, as they got 3 wickets at the top of the order, where in over number 7 as Firdaus Kanai goes to Asadullah down the leg side, will be a wide, so he'll have to re-bowl that, and one more run added to the scoreboard takes the score to 65. They need 91 runs to win. It is gettable. You have 65 bowlers at Rising Star spinner. They need to bat sensibly, take the game deep, as Mansoor Decorations at Rafiabad, he watches. And then we have Suhan watching the game as well, watching from Swayan. And brother, it is here at the Green Park Sports Field of Paripura, which is hosting the final of Dandoosa Premier League. And Dar Javed is also watching the game. And in the meantime, they are not behind the wicket-keeper, they are outside the boundary ropes, dear brother. And thank you very much, John Mohammed, as well. As we get ready again, Firdaus 1 for 14 as he goes to Irfan. Outside off, Irfan hits it hard, doesn't time it well, goes down to covers, and there is no addition to the total. Mansoor and Ghazi Irfan, and responsibility of the organising body to keep the children away from the keeper. And brother, they are outside the boundary ropes, they are not near the keeper. It looks close in the camera angle, but they are way behind. And Suhan, I have already informed you, it is here at Paripura. The match is going on at Paripura, and it's the finals of Dandoosa Premier League. 66 for 3 in over number 7. They have that run rate well under control, but they lost 3 wickets, and a couple of wickets more will do it for, and it will do it nicely
for Zenegir Stars. Another dot ball, and Firdaus is bowling an excellent spell here. He's in his second over, 1 for 14, and he got rid of the big man Lon Abid, and then it was Shabir Pandit, I guess, who got rid of Tahir Mir. Those 2 wickets could turn things on for them, as Hey Arsalan is sending in love for Zenegir Stars. Ghazi Irfan, thank you very much, brother, for your love and support. 10 overs to go, that is exactly 60 bowlers. They need 90 runs, that is 9 runs per over. So it is well under control, it is hanging in balance at this stage. We talk about Zenegir Stars, they got 3 wickets at the top of the order, but the run scoring, it has been more than 9 runs per over. We got BMZ Group Strakpura, the proud sponsor of Global News Network, and of this live broadcast as well. Mudassir Mir also watching the game, as we have the coordination of Al-Maida Bakery as well, and this live broadcast is sponsored by these. And Danish Lun, another young and emerging fast bowler, has been brought into the attack, and it will be Asadullah to face, batting on 13 of 6 bowlers, striking it more than 200. And Danish has got long off out and deep cover on the offside, and he is just setting the field on the onside now with long on and deep mid wicket, and he has third man out as well with his fielder set. So it's a 6-3 fielder set as Danish starts, leaves the station. First ball, trying to use the shoulder, a short delivery. There wasn't a bounce as the ball goes nearly at the shoulder height of the batter, rolls down to the wicket keeper, and there is no run at all. As Ghazi Irfan constantly providing his instincts, providing his information. The batters, they just need to go long, just bat deep, so that he can mean business. So in the meantime, wicket keeper, and the bowler was interested. I guess he has put down the catch, but it doesn't matter, as it's a no ball, as he has clearly overstepped there, and Danish was stepping, and it's a big no ball, and the ball got the inside edge. Wicket keeper puts the catch down. He's signaling just it's a no ball, dear, don't worry, and will be a free hit coming up. So Asadullah has got a free hit ball coming up, and he will be the man winding up for the big shot. He'll be the man looking for the big shot here, and you surely have got the license to swing, have a swing at it. Is free hit going to yield some runs? No, it doesn't. It's a dot ball, as Danish bowls a bit fuller, bit wider, and out of the hitting reach of Asadullah, and has gone into the gloves of wicketkeeper. It's 67 runs on board, and this stage Zubaydar mentioning that now the batters will have to face this youngster's speed. Has got a speed as well, but you know, it sometimes can go against you. It can backfire sometimes. Those mistimed shots can travel the distance, and he is bowling excellently well. He is keeping it on that off-stump line, and he is not letting Asadullah to use his range of shots. He is not letting Asadullah to use the range. And Jameel Ahmed, thank you very much, and thank you millions of times for your love and support, brother, for your appreciation. It really means a lot. As Danish goes again, shorter, and this time even more pace and more bounce. As Asadullah is calling for a wide here, he is demanding wide, and umpire isn't interested, but umpire should chuck in there. There have been those 2 balls which have went nearly above the head high, but I guess that one reared up the surface and has gone into the gloves of wicketkeeper. 67 for 3 in over number 8. As I said, a fascinating and an interesting and intriguing session of play going on, and this time is gone, over long gone for a 6 in the slot and dispatched out of the side. A huge and humongous 6 coming off the bat of Asadullah. His couple of dot bowlers, and the batters do tend to go for the big shot, lining up for the big shot, and he goes across the lines as the ball sails way back into the stands. That sounded good off the bat, as the long on fielder was a mere spectator as he watches the ball sail over his head and has gone many a mile. It's a monster hit
takes the score to 73 for the loss of 3. In over number 8 as Rising Stars Spinner are chasing 156 to lift to the title and to be crowned as the champions. Danish, who was more often focusing on a short stuff, focusing on back of length, bowls one into the slot, and that has gone all the way for 6. He goes again, short and wide. That is what he is trying to do. He's got pace and he's got bounce as well. That is where he has been good. That is where he has been able to stop the run flow, and over comes to an end. 8 overs gone, 73 for the loss of 3. तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका। 9 ओवर्स का खेल बाकी, रन्स दरकार 83 मुकाबला जीतने के लिए राइजिंग स्टार बिनर की टीम को। और असदुल्ला अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। 19 रन्स बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, जबकि इरफान लोन ने 7 रन्स बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 73 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार बिनर का। फिरदौस अहमद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। फिरदौस की गेंद इरफान लोन के लिए, पैड से टकराई गेंद और वहां पर विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को फीड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 90 ओवर का खेल जारी। 17 ओवर्स पर यह फाइनल मुकाबला मुश्तमिल। और हलीम स्पाइसेस फूड एंड स्पाइसेस से हमारे साथ फिरदौस जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस जुड़ने के लिए। फिरदौस अहमद जो है बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद के साथ इरफान लोन के लिए। गेंद की इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे स्लिप में, और उन्होंने बाकी का काम तमाम किया। तो इस तरह से ये चौथी विकेट गिरती हुई, और विकेट गिरी है इरफान लोन की। इरफान लोन 7 रन्स बनाकर आउट हुए। 9 गेंदों का सामना किया, स्लिप में उनका कैच लिया गया और फिरदौस अहमद की गेंद का शिकार बने इरफान लोन। 83 यहां पर जो है अभी भी 83 रन दरकार। 73 के स्कोर पर यह चौथी विकेट गिरी इरफान लोन के रूप में राइजिंग स्टार बिनर की। जुबैर डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दानिश के हवाले से लिख रहे हैं कि 9 उम्र खिलाड़ी और एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं। और आरिफ खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर मोहिउद्दीन के साथ आप हमारे साथ सतलोरा रफियाबाद से जुड़े हैं। वॉचिंग विथ हुमैरा मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जमील अहमद भी साउथ कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, खुद कमेंट्री के फराइज अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शहजाद लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो नए बल्लेबाज आए हैं मुदस्सिर परे, साथ में बाएंगे मीर असदुल्ला का और सामना करेंगे फिरदौस अहमद की गेंद का। यह 9वें ओवर का खेल जारी है। अभी भी कुल मिलाकर 52 गेंदों का खेल बाकी और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 83। 52 गेंदें, 83 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फिरदौस नए बल्लेबाज मुदस्सिर परे के लिए। गेंद के बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ और खेलते ही दौड़ पड़े। रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 74। 4 विकेटों के नुकसान पर राइजिंग स्टार बिनर का 156 रन के ताकुब में 74 मजमूई स्कोर। फिरदौस अहमद आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए पारी का 9वां ओवर फेंक रहे हैं। इनफरादी तौर उनका 3रा ओवर। सामना करेंगे असदुल्ला उनकी गेंद का। गेंद के ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहता असदुल्ला ने गालिबन गेंद की रफ्तार को कम किया था फिरदौस ने, और गेंद पैड को छू गई। हल्की सी अपील, लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, ऐसा इशारा दिया अंपायर तबस्सुम ने। तबस्सुम और जहूर अहमद आज के मैच में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आरिफ खान, जुबैर डार और शहजाद लोन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी। इसी बीच अगली गेंद के साथ फिरदौस अब्दुल्ला के लिए गेंद को खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, क्या गेंद को रोकने में कामयाब होंगे लॉन्ग ऑफ के फील्डर? जी हां, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब। इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार बिनर का 75। 4 विकेटों के नुकसान पर 49 गेंदों का खेल बाकी और रन दरकार 81 मुकाबला जीतने के लिए। 81 रन चाहिए, 49 गेंदों का खेल बाकी। 9वें ओवर का खेल जारी है। फिरदौस ओवर की आखिरी गेंद के साथ, गेंद की ऑप्शन से थोड़ी बहुत बाहर। ओवर मुकम्मल होता हुआ 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर
75 4 विकेटों के नुकसान पर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्कि रन चेज में राइजिंग स्टार बिनर का, और रन दरकार 156 मुकाबला जीतने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जुड़ने के लिए। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद अहमद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ दानिश लोन के लिए, दानिश और फैजान के लिए भी जो है अपना प्यार भेजा है। किसने भेजा है ये हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपका नाम जो है गालिबन चाइनीज लैंग्वेज में है। डार वहीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आठ बल्कि 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब 8 ओवर्स का खेल बाकी, 48 गेंदे, रन दरकार 81 मुकाबला जीतने के लिए। करीब जो है बल्कि 10 से जायद की औसत चाहिए। यहां पर कोई बड़ा जो है टारगेट नहीं कहा जाएगा, 10 से जायद की औसत हासिल करना। T20 में हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और बाकी का काम तमाम किया लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने। इस तरह से ये विकेट गिरी है और आउट होने वाले बल्लेबाज बने मीर असदुल्ला। मीर असदुल्ला एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन गेंद को लंबा खींच नहीं पाए और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर उनका कैच हासिल किया फील्डर ने। तो इस तरह से मीर असदुल्ला आउट होने वाले 5वें बल्लेबाज बने। राइजिंग स्टार बिनर के 75 के स्कोर पर यह 5वीं विकेट गिरी राइजिंग स्टार बिनर की। 156 रन का हदफ मिला है मुकाबला जीतने के लिए। बशीर अहमद वार रोहामा ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बशीर अहमद वार के साथ साथ सज्जाद अहमद डार हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ साथ डार वहीद भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। गुलाम अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाम अहमद तांत्रे बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सज्जाद अहमद डार, जुबैर डार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैनगीर स्टार्स के लिए अपना प्यार भेजा है एक और हमारे व्यूवर ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाम अहमद तांत्रे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 5 विकेटें गिरी है 75 के मजमूई स्कोर पर। 81 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 47 गेंदों का खेल बाकी। तौहीद भट्ट के खाते में जाने वाली विकेट। और व्यूवर्स को जानकारी देना चाहूंगा कि तौहीद भट्ट जो है जैनगीर स्टार्स के नुमाया स्कोरर रहे, गालिबन 74 रन की 84 रन की पारी खेली तौहीद भट्ट ने और नॉट आउट रहे। एक अच्छी पारी खेली तौहीद भट्ट ने जो इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर है और नुमाया स्कोर रहे 84 रन के साथ पहली पारी में। 75 मजमूई स्कोर 75 मजमूई स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर जारी है, पारी का 10वां ओवर जारी है और बॉलिंग मार्क पर तौहीद भट्ट नए बल्लेबाज आए हैं आदिल, साथ निभाएंगे मुदस्सिर परे का। अभी भी 81 रन दरकार, 47 गेंदों का खेल बाकी। बशीर अहमद वार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैनगीर स्टार्स के बारे में लिख रहे हैं कि वो ट्रॉफी जीत सकते हैं लेकिन अभी T20 क्रिकेट है, कुछ कहना कबल वक्त होगा। एक अच्छा एक बल्लेबाज अगर कुछ देर के लिए 2-3 ओवर्स के लिए जम जाए तो मैच का नक्शा बदल सकता है। बट साकिब हमारे साथ जुड़े हैं, बासित परे भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद हवा में खेला गया स्ट्रोक और लेकिन फील्डर पीछे और 2-3 का टप्पे खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76। अब जो है 80 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 46 गेंदों का खेल बाकी। तौहीद भट्ट की गेंद को खेल दिया, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं दिख रहा होगा और गेंद एक टप्पा खाने के बाद कवर बाउंड्री को छूते हुए 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन के इजाफे के साथ 80। 5 विकेटों के नुकसान पर मुदस्सिर परे के बल्ले से यह चौका आया। सिराजुद्दीन हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया एक मतलब फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली पारी में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और 80 है स्कोर। अब यहां से 76 रन चाहिए, 45 गेंदों का खेल बाकी।
45 गेंदें 76 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। And I guess the leg umpire fell unconscious there, because it is very hot out there. You need to keep yourselves hydrated as well. $80 for the loss of 5, and 9.5 overs have been bowled. And I tell you that Rising Star spinner have got some troubles now, as they have already lost 5 wickets. Still a long way to go. They need 76 more runs to win. And we have 45 bowlers. No doubt cricket is the game of twists, and you always expect unexpected things of this game. As Rising Star spinner, they need to think out of the box, as it's a tough situation going on for them, as 5 wickets are back into the pavilion. But you need to bite the bullet at this stage, as you have to bat sensibly, you have to take the game deep, as the batters need to carry through to carry the day. And hey Arsalan, dear brother, I guess the umpire there, the leg umpire, fell unconscious because of the scorching heat, and he has been taken back. He's been taken off the field, and Ghulam Ahmadi is clearly, I do agree with you, I'm on board that it is very scorching. It's hot and humid out there, and the players, the match officials, need to keep themselves hydrated. And 80 for 5 at the halfway stage of over number 10. And good going, as I said. It has been an excellent phase of play going on for Zenigir Stars. The pressure they have created, they need to carry that. Otherwise, couple of good overs for Rising Star spinner, the game will hang in balance. And Tawheed Butt, who was the star with the bat today, unbeaten, fired, unbeaten 84 runs. Played a blistering innings, played a spectacular and a magnificent not out unbeaten innings of 84, and he scored a wicket as well. And when you have got the day, when you win the day, all I can say, everything goes your way, everything comes your way, and that is what happened with Tawheed Butt today. Played a magnificent innings, and now he's bowling well. First ball, and this has been lofted to long on, and one bounce into the boundary for 4. The fielder was there at long on, but he was just watching the ball, as he was late to get off, and he just goes one bounce down to the mid-wicket boundary for 4, long on boundary for 4. The fielder was there, but he was a bit late to react, and a bit lazy effort by the fielder. Needed to be a bit quick, needed to be agile and electric and flexible. Unfortunately, it runs away down to the boundary for 4. Takes the score to 84 for the loss of 5, as this partnership is very crucial, very important for Rising Star spinner to keep going, and to keep the momentum of the game, and to keep the hopes alive as well. With 85 on board, they still need 71 to win, and 44 bowlers in a T20 game. It is very much well under control, but the man problem lies in the wickets column, as half of the side is back into the dugout, resting there, as Mudassir Pari, he got a responsibility to carry the innings forward. As next ball, as he is half forward, beautifully drives that one down to sweeper cover area. A well controlled defensive push, a single there, and takes the score to 85 for 5. As Butt Nazir, Ghulam Ahmed, they are continuously watching the game and enjoying it. As next ball, the batter waits for it, defends it off the crease, quick run, as they steal a quick single, and it ends the over number 10 with a single. 86 for the loss of 5. So 42 bowlers, and they need 70. That's to be precise. It's 10 runs per over to chase down the target. With 5 wickets in hand, couple of big overs, and the game will tilt in favor of the batting side. A wicket here, as Zenigir Stars will strike through.
As in the meantime, Danish Lund again has been introduced. So the captain, trusting the youngster throwing the ball to deliver, will have to wait and watch. It will be Adil to face, as he got single of the final ball to retain the strike. So the field is set for Danish Lund. There is long on, there is deep backward Scalag on the onside. So he has three fielders patrolling the boundary line. Long off, deep cover, and third man outside the 30-yard circle. He's got pace, he's got bounce. We'll have to wait and watch as he leaves the station for the first time. Oh, that's a beauty of a short ball. A peach that was. A cracker of a delivery. Just rears off the surface, goes mighty close to the glove of the batter and gone into the gloves of wicketkeeper. A dot first up, but a good delivery. And it will create that doubt in the mind of the batter. And Danish has got a long run up, smooth and a high arm action. A super talented lad he is, as he goes to Adil once again. And cuts back into the batter and beats him with the pace, goes into the gloves of wicketkeeper. Over number 11 is in progress, 86 for 5. And I tell you, Rising Stars Pinner, their batters need to regroup and to contemplate on the things here, what needs to be done from here on. And for me, from my point of view, they just need to bat deep and just work in singles and doubles. Short ball again in the air and gone. Danish strikes. A lack of timing. He was trying to go onside. His eyes were somewhere else and he was targeting somewhere else. And he hits the ball down to the cover region, and it is a simple catch, a soft dismissal as Adil walks back to the pavilion. As I told you, captain trusting Danish, and he delivers with a wicket. 6-1 goes down, and in spot of bother here, the side of Rising Star has been here with 6 wickets down on just 86. Still a long way to go, still a lot of things to do in this game to carry the day, to scale the target, and need miraculous efforts from here on. Need a match-winning effort from Mudassir now, who is there batting on 10. As Adil departs on 2, as Danish's pace was too hot to handle for the batter. He was beaten couple of occasions, and now, as I said, he was trying somewhere else. His eyes were targeting somewhere, and the shot went somewhere, and he offered a simple catch there at covers. Adil walks back to the pavilion, has perfect use of pace and bounce, and Adil's Danish strikes. And the new batter, he welcomes him with a good short ball on the offside, on that off-stump line, and it shapes away from the batter, a gentle shape, and gone into the gloves of wicketkeeper. 4 dot balls on the trot, as 10.4 overs have been bowled. 86 Wakar Butt sending in best luck, best wishes for both the teams, as Shoaib Sayed is the new man. As Danish Lund goes once again to Shoaib Sayed, goes off the back foot and steers it nicely down to third man. He was riding the bounce well, covering the pace and line of the ball, and gets off the mark with a single, and the score is 87 for the loss of 6. In the meantime, at this stage, I could tell you Zenigir Stars have that edge, have that upper hand over Rising Stars. Spinner Danish goes again, a good over, a fantastic over at this stage of the game, and just one coming off it and a wicket as well. So 11 overs gone, 87 for the loss of 6. This game tilting in favor of Zenigir Stars with 36 bowlers and 69 runs. It's more than 11 runs per over, and not an easy task. As in the meantime, Tawheed will continue his spell. बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है
12वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है और अभी भी रन्स दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 69 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। 69 रन अभी भी मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। 12वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर 34 गेंदें और रन दरकार 69 मुकाबला जीतने के लिए। 12 से जायद की औसत से रन बनाने होंगे राइजिंग स्टार बिनर को, लेकिन अहम बात यह कि 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं और दानिश ने क्या लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा किया, पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाजों को अपनी पेस से और उसके बाद बल्लेबाज जो है विकेट दी बल्लेबाजों ने। इस दौरान बल्ले का बाहरी किनारा स्लिप में फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अलमैदा रोहामा से हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलमैदा बेकरी से हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्पॉन्सर्स भी आरजे मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस दौरान गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, इस दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। वकार भट्ट लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बॉलिंग मार्क पर है तौहीद भट्ट। अभी तक अच्छा ओवर साबित होता हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर से 4 गेंदें फेंकी, कोई रन नहीं आया इस ओवर से अभी तक। अगली गेंद और इस मर्तबा बल्ले और गेंद के दरमियान सही कनेक्शन, गेंद जो है मैदान से बाहर, 6 रन के लिए। यह छक्का आता हुआ बल्लेबाज सुहेब के बल्ले से और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 हो चुका है। सुहेब के बल्ले से आने वाला ये पहला छक्का, सुहेब के बल्ले से आने वाला पहला छक्का, 93 स्कोर बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार बिनर का 6 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी कुल मिलाकर 31 गेंदों का खेल बाकी, 63 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 31 गेंदें, 63 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तौहीद भट्ट बॉलिंग मार्क पर है, ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे और सामना करेंगे एक मतबा फिर सुहेब सईद। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। ये फाइनल मुकाबला डंडूसा प्रीमियर लीग का और अगली गेंद, ओवर की आखिरी गेंद और गेंद को खेल दिया है वहां फील्डर के सीधे हाथ में गेंद और इस तरह से एक और विकेट गिरती हुई। यह 7वीं विकेट गिरी है और मजमूई स्कोर है 93। कट किया था बल्ले का बाहरी किनारा और हवा में लहराती हुई पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथ में गेंद, तो विकेट गिरी सुहेब सईद की और रन्स है 93, 6 विकेटों के बल्कि 7 विकेटों के नुकसान पर। राइजिंग स्टार बिनर की टीम इस फाइनल मुकाबले में कहा जाएगा कि पिछड़ती हुई। अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी, 63 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 30 गेंदें, 63 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, मजीद 5 ओवर्स का खेल आना बाकी। आरजे मलिक बहुत बहुत शुक्रिया, वकार भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दानिश को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। दानिश गालिबन अपने स्पेल का आखिरी ओवर फेंकेंगे। तौहीद भट्ट जो है उन्होंने 2 ओवर किए, 17 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की तौहीद भट्ट ने। वकार भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनके साथ साथ यासिर बशीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश लोन अपने कोटे का 3रा ओवर फेंकेंगे। 2 ओवर किए, सिर्फ 8 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अपनी गेंदबाजी से पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाजों को। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया और गेंद फाइल लेग बाउंड्री को छूते हुए 4 रन के लिए। यह चौका आया मुदस्सिर परे के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन की मदद से 97। दानिश की गेंद का जो है स्पीड का फायदा उठाया मुदस्सिर परे ने और गेंद को ऑन साइड की तरफ लॉन्ग बल्कि फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेला 4 रन के लिए और 4 रन के इजाफे के साथ 97 हो चुका है स्कोर। 59 रन दरकार, 29 गेंदों का खेल बाकी। दानिश बॉलिंग मार्क पर अपने कोटे का 3रा ओवर फेंक रहे, पारी का 13वां ओवर। दानिश बॉलिंग मार्क से अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट मुदस्सिर परे के लिए। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और गेंद को खेल दिया मिड ऑफ पे फील्डर
गेंद के पीछे एक रन बना, दूसरे रन के लिए गए और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोकने की कोशिश। इस दौरान बाउंड्री लाइन को गेंद छूती हुई 4 रन के लिए। तो 4 रन का मजीद इजाफा, स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 103 बल्कि 101। बट नजीर से तलोरा से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 101 हो चुका है स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर 55 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 28 गेंदों का खेल बाकी। दानिश ओवर में तीसरी गेंद के साथ लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं। इस मरतबा गेंद को तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट की जानिब खेला और नॉन स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज निकले थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर मौजूद, इरादा तर्क किया और वापस अपनी क्रीज तक पहुंचने में कामयाब। 101 मजमूई स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर मुदस्सिर परे 18 रन पर खेल रहे हैं 10 गेंदों का सामना करते हुए। वकार भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लिख रहे हैं कि जब तक मुदस्सिर परे क्रीज पर है कुछ भी हो सकता है। मुदस्सिर परे एक मुताफिर दानिश की गेंद का सामना करेंगे और गेंद जो है बिल्कुल लेग स्टंप के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 101 7 विकेटों के नुकसान पर यह 12वें ओवर का खेल जारी। वहां पर मुदस्सिर परे जो है अंपायर की जानिब देख रहे हैं कि गेंद को वाइड करार नहीं दिया गया है और काफी ज्यादा जो है ऑफ साइड की तरफ शफल किया था बल्लेबाज ने। गालिबन यही वजह रही कि अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया, इसी पर एतराज जता रहे हैं और अंपायर को लगातार कुछ बता रहे हैं मुदस्सिर परे। मुदस्सिर परे एक मरतबा फिर जो है सामना करेंगे दानिश के ओवर की गेंद का। दानिश बॉलिंग मार्क पर 8 रन आए इस ओवर से और यह पारी का 13वां ओवर। इसके बाद मजीद 4 ओवर्स का आना बाकी। कुल मिलाकर 26 गेंदें और रन दरकार 55 मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद मुदस्सिर के लिए और पड़ने के बाद काफी ज्यादा उछाल और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अपनी रफ्तार से जो है बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं दानिश। काफी ज्यादा रफ्तार उनकी गेंदबाजी में और उसी वजह से बल्लेबाज जो है बीट हो रहे हैं और टाइम नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रोक्स में। दानिश ओवर में आखिरी गेंद के साथ 23 गेंदें 55 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। सामने है मुदस्सिर परे और कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद जो है विकेट कीपर रोकने में कामयाब और दानिश का ओवर मुकम्मल। हालांकि पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे लेकिन उसके बाद 4 डॉट गेंदें फेंकने में कामयाब और इस तरह से यहां 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 101 मजमूई स्कोर, 24 गेंदें, रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 55। And the required run rate is creeping up, it's climbing, it has gone nearly 14 runs per over now. An excellent comeback by Danish in the previous over after being hit for a couple of boundaries, back-to-back fours, and then he strikes back, sending in those 4 dot deliveries on in a row. And Vakar Bhatt is mentioning that was a clear wide as Mudassir Pare was shuffling across the stumps and it was slipped down the leg side, and to me it was a wide as well. In the meantime, Tawheed will start the proceedings of the fresh over. First ball, long on, over mid-wicket. Yes, this has gone all the way. I was trying to go long on and just drags the ball down to the mid-wicket region and sends that one sailing into the stand as for a 6. His eyes were aiming at the long on region as the ball comes back into the batter and hits it with the turn and sends that one into the stand as for half a dozen. And they need more of these kinds of shots as Tawheed, and outside off stump nicely punches that one away as the batters steal a quick single. So 7 have come up first 2. 14 runs per over is that what they need as Tawheed in his 3rd over has bowled at a good spell until now. 2 overs, 2 for 14, and now to Mudassir, and he is trying to go across the line. There wasn't a bounce on that delivery and he gets beaten as the ball sneaks through, goes right underneath the bat, and wicket keeper fumble as it goes down to short third man where Firdaus fielders, and there is no addition to the total. The ball to Mudassir, he goes down the ground, lofts that one away, and his power takes the ball over the ropes for a 6. Second 6 of the day, second 6 of the over, and it is a powerful strike down the ground. Long off was there, but he just watches the ball to sail over his head, and it goes into the stand as for 6. 13 coming off this over,
and it is proving to be a good over. Now he comes down, gets beaten and stumped by the wicket-keeper. A good short ball by the bowler, a spinner bowling a back off length delivery. He knew it that the batter was coming down the track, just pulls his length back. It was a drag down. Had Mudassir been at the crease, he could have smashed the ball out of the park as well. And he was down the wicket as he fails to cover the bounce, and wicket-keeper does the rest. He was electric behind the stumps and he dislodges the bailers within no time, and Mudassir was way out of his crease, and this could be the biggest moment in the game as he walks back after smashing a six. And he was trying to go big again, he was trying to go loft to the ball again, but how clever was Tawhid there. He scored the experience of the game, and he slips in a drag down, he slips in a short ball, just pulling his length back, and Mudassir fails to lay bat to the ball, and excellent work done by the wicket-keeper behind the stumps. He walks back 114 for 8, still 42 runs away, and 19 bowlers left. 19 bowlers, 42 to win, and this is turning out to be a good game. This is turning out to be an electric game as the new batter walks down the centre, faces the first ball. It's Kaisar Mir as he pushes it back to the bowler, and well fielded on his follow through, saves the single. 18 bowlers, 42 runs to be precise. It's 14 runs per over, and need couple of big hits here, need a big over, at least 20 odd runs in this over to make things interesting. And at this stage that was a good over. He got rid of Mudassir Pari, who was proving to be the man who could decide the fate of the game. But he departs, got stumped by the wicket-keeper there. And now the situation is 18 bowlers, 42 runs. But the problem is for Rising Star has been is that they have lost 8 wickets in the meantime as well. Suwakar, Zubaidar, and mentioning that previous over of Tawheed could make the difference. Shot down the leg side as the batter helps it away on the onside. Will get a single though, and those singles are not going to bother the side of Zanigir Stars. If big shots come, that is where the tensions will arise. That is where there will be a bit of pressure on the bowlers. Shabir Pandit has been introduced into the attack, and this over could turn things on. If couple of big shots will come, and then definitely that match will turn. And Zubaidar mentioning now it is the game for Zanigir Stars to lose from here on. They have that grasp of the game, they have that edge over. Again a good delivery, a bit of bounce on offer as the batter fails to lay bat. Wicket-keeper again fumbles, and it gives a single. 15 bowlers, 40 runs. Not going to be easy. Zubaidar, Vakar Butt, and another viewer is mentioning that it is done and dusted. It's done for the day for Mudassir Bhai today, and surely he got carried away. He needed to take the game. Deep short ball, and this is a 6. A beautiful strike, rocks off the back foot and smashes it away. And we talk about Mudassir, I guess I still believe he got carried away, and after smashing a 6 you needed to take it till the last over, and once again by advancing down the track he has given away his wicket. And next ball hits it down to wideish long on, a single. Just 9 coming off this over until now, so 10 coming off 5 bowlers, so they need a big shot here to level the run rate, which is going nearly 15 per over. As Shabir goes again, walks across the stumps, and he was trying to lap it fine, but gets wrapped on the pad. It rolls down to fine leg, and a single coming. And now they need 32 runs to win. I guess 31 to win off 2 overs. 16.5 runs, the Rukai run rate here. As Zubair Mir watching from Rahama and Zubaidar. And batting side, they were definitely in a hurry, and it was evident. You see when Mudassir Pare was batting, he hit the 6, and then on to the next ball you needed to rotate the strike. At that stage you just needed 13 runs per over. It was well under your control, and the rushness of the batters
and it has nearly costed them a game. With 12 balls to go, they need 31 to win. वेल विशर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जुबैर डार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मीर, मेरे होम टाउन से। और कुल मिलाकर यहाँ पर हवा में खेला गया स्ट्रोक और एक टप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया। इस दौरान 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 17 गेंदें और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 30 बल्कि 40। 17 गेंदें और 40 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए राइजिंग स्टार बिनर को एक बड़े ओवर की जरूरत राइजिंग स्टार के लिए। इस मरतबा फैजान की पटकी हुई गेंद और अंपायर की जानिब देखा बल्लेबाज ने, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। फैजान आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जानिब वापस जाते हुए। 16 गेंदें, रन दरकार 40 मुकाबला जीतने के लिए। जुबैर डार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर सरवर इज वॉचिंग फ्रॉम द वेन्यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फैजान है बॉलिंग मार्क पर, 9 ओवर खिलाड़ी। इस दौरान 6 रन के लिए गेंद को खेला और 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ इन 6 रन की मदद से 132। 34 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 15 गेंदों का खेल बाकी। इसी तरह के बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत राइजिंग स्टार बिनर को इस मुकाबले में वापस आने के लिए। कुल मिलाकर 8 विकेटें गिर चुकी है और सिर्फ 2 विकेटें दरकार जयनगीर स्टार्स को मुकाबला जीतने के लिए, जबकि अभी भी 34 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए राइजिंग स्टार को, बल्कि 24 रन चाहिए। अगली गेंद बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, उस ओर फील्डर तैनात, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 14 गेंदें, रन दरकार 23 मुकाबला जीतने के लिए, बल्कि 8 गेंदें बाकी है क्योंकि ये 16वें ओवर का खेल जारी है। 17 ओवर्स पर यह मुकाबला मुश्तमिल। सिर्फ 8 गेंदें और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 23। अगली गेंद, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत और डॉट बॉल यहां पर फैजान के जरिए। फैजान आखिरी मर्तबा ओवर में, अभी तक इस ओवर से 8 रन आए हैं। 7 गेंदें और रन दरकार 23 मुकाबला जीतने के लिए। 17 ओवर्स पर यह फाइनल मुकाबला मुश्तमिल था। 7 गेंदें, 23 रन चाहिए। बड़े स्ट्रोक की जरूरत, क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा दाऊद के बल्ले से? और इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद के पीछे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, क्या पहुंच पाएंगे? जी, पहुंचने में कामयाब और 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 135 हो चुका है। अब यहां से 21 रन आखिरी ओवर में चाहिए। They are left way too many runs to the final over. 6 balls to go, 21 to win, and they need a miraculous effort to scale the target. Couple of big shots in first 3 or 4 bowlers will define this chase as well. As Abdulaziz Rathar is watching from Wizir, Zubair Dar continuously watching the game from the beginning, and Ghulam Qadir and S. Hamid Kashmiri as well. He's watching from Delhi, and then we have got Shahid Najjar and Malik Zahid as well. And Zubair Dar mentioning Nasir Sarwar is watching from the venue where the match is going on. So they've gone to Danish to bowl this match deciding over. He has got 6 bowlers, and as a bowler, as a faster bowler, you believe that you have enough runs to defend. You have 21, so plenty of runs in your bank. And first couple of dots, first couple of deliveries will definitely define the chase. Malik Zahid, Mir Dawood is a dangerous batter as Danish goes with the first ball. This has gone over mid-wicket for a 6. And he has been welcomed with a terrific strike. And that is what Rising Star spinner need. 21 and first ball has been dispatched for a 6. 5 balls to go, 15 to win. An interesting battle going on, and this 6 has really infused life into this game. A huge 6 coming over mid-wicket. Danish, the youngster, under serious pressure. A full ball, and this has been dispatched away and into the stand. A serve long off for a 6. Back-to-back boundaries, and that was a bad delivery at this stage of the game. He slips in right into the slot. Oh, that was a hit-me delivery, and it is a terrific strike down the ground. Well, I call it a shot of an emperor there at this stage. 21 to defend, and he has conceded 12 already of 2 bowlers. Expected, unexpected in cricket game.
And a twist here is that 2 balls and both have been dispatched into the stands. And Danish under the pump here. The youngster has got enormous pressure of bowling the final over of the game. And this over is going to decide the fate, who is going to carry the day, who is going to go over the line. And Danish is under serious pressure here. 4 bowlers to go, just 9 to win now. Could be anybody's game from here on. And Kaiser Mir is proving to be a real entertainer. Danish goes again, onto the pads, hits it in the air and gone. Long gone fielder completes the catch. And he just needed to hit it more power to carry it over the line. And he times that one well, but no power behind the shot means it has carried straight into the fielder. Long gone fielder makes no mistake. Another twist in the game. And had he hit it with more power, it could have sailed over the fielder. But he picks the fielder and he walks back. And he has really infused life into this game, Parvez. Those 2 big shots coming. And you can see he walks back to the pavilion. He feels devastated there. And I can say a disaster for a batter. जी हाँ, एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे और सिर्फ अब 3 गेंदों का खेल बाकी और रन दरकार 9 मुकाबला जीतने के लिए। 3 गेंदों का खेल बाकी, 9 रन चाहिए और आखिरी जोड़ी मैदान में राइजिंग स्टार बिनर की। 147 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी जोड़ी मैदान में है और बॉलिंग मार्क पर है दानिश लोन। अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। 3.3 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। मलिक जाहिद हमारे साथ जुड़े हैं, शबरोज डार हमारे साथ जुड़े हैं और शौकत राथर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आने वाली 3 गेंदों पे क्या अंजाम होगा ये देखना होगा, क्योंकि यहां से 3 गेंदों का खेल बाकी और रन दरकार 9 मुकाबला जीतने के लिए। दानिश को कुछ सलाह मशवरा देते हुए टीम के सीनियर खिलाड़ी और नए बल्लेबाज जो आए हैं वो क्रीज पर मौजूद है। अब दानिश चले, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, गेंद की और इस मरतबा डॉट गेंद विकेट कीपर जो है वो विकेटों के पीछे, उनके हाथ में जाती हुई गेंद, डॉट गेंद। 2 गेंदें 9 रन दरकार। बड़ा स्ट्रोक खेलने की यहां पे जरूरत। सामने है परे अयूब। 2 गेंदें 9 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए राइजिंग स्टार बिनर की टीम को। ज़ेनेगिर स्टार्स की जानिब से दानिश लोन है बॉलिंग मार्क पर। आखिरी जोड़ी मैदान में है। 2 गेंदें 9 रन। 2-3 कदम पहले आगे आए, डॉट गेंद और अब जो है 90% कहा जाए, 99% कहा जाएगा कि ज़ेनेगिर स्टार्स की टीम ये मैच जीत चुकी है। अब सिर्फ 1 गेंद का खेल बाकी और रन दरकार 9। अगर वाइड या नो बॉल न करार दी जाए तो ये ओवर की बल्कि इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद होगी। दानिश आखिरी गेंद के साथ अयूब के लिए गेंद को खेलने में कामयाब, फील्डर मौजूद, हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन यहां मैच जीतने में कामयाब हुई है ज़ेनेगिर स्टार्स की टीम और 8 रन से इस मैच को बल्कि इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया ज़ेनेगिर स्टार्स की टीम ने। और ज़ेनेगिर स्टार्स की टीम की जानिब से नुमाया कारकर्दगी दिखाई तौहीद बट ने, जो 84 रन के साथ तो अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और हम जो है थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।